भाई चेंज କରୁଛି नहीं बैकग्राउंड टाइप चेंज करे हां एडे दिन आछने कि ये रश्मि भाई नहीं नहीं सेडी अछि सेटिंग्स रे देखो सेटिंग्स रे हमरो जूम रो सेटिंग्स रे अछि देखो सर सर रंजीत सर से स्क्रीन रे टिके देबे ने स्क्रीन शेयर में व्हाट्सएप रे छाडी छी हेलो रंजीत सर व्हाट्सएप ग्रुप रे छडा आइची राम बाबू नहीं नहीं स्क्रीन सेट है सर ने मु गीत करियो ना हेलो करंदो एटा कोन करियो पड़ियो मते आपण हेलो करियो सर परमिशन देबे सर परमिशन एले आपण मागिले मु देबे आपण एबे मागी दियंतु ठीक है मु गल लेखि मु आइ दर्दी गल ले हेलो हेलो सर हेलो हां रेडी अछि अच्छा हो भला ला नै मु एटा जाननी केमती हुए इट शेयर स्क्रीन रे अछि मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली अच्छा हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज इंडिया रो ऐड अप्लाई करू बड़ोडे घेना ये आज देखो आज तो सुखी जाई बड़ोडे घेना है ना अन्न ओडा करता है डेस्कटॉप रे कर दिया दैट इन द डेस्कटॉप सुनो ठीक है इतने जे सॉरी बड़ा पे अरे ये सोनल ये आपटरे गैस सेंटर दी 5 इंच गैस हैंडी ता सीढ़े लगे जेलटा 5 दी सीढ़े 5 दी हां ये लगी जो तो सीढ़े देने ना हां हां 3 इंच कर दो हां 3 इंच कर दो और 3 सीढ़े से जैकेट बंद है जी ठीक है जैकेट बंद तीन बनाई ना 5 बनाई है चेंज करना स्क्रीन टा हां तो इन्हीं जीवन में इन्हीं जीवन में तो 4 इंच है बोले भाई जो है एटा देखि देखो ना देखि तो छै और 3 बन दियो बेसी हां जगह हां नहीं नहीं 3 बन दियो 3 बन दे तन तो ये कोले आए कहीं एटा तो भारी हो नहीं है ते कहीं लगा जाए हेजो हां 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 3 बन हेलो यूट्यूब के तो कहीं बन चेंज करो ये जो हम ये पट्टी जो टेक्सचर है सेटा काउंटर किया डेस्कटॉप रख दे तुम हां हां नहीं तो पूरा अच्छा स्क्रीन दा हां ना जेटा भीतर रहि जे और बैकग्राउंड किंग सेटअप कइलो 15 इंच एरा उल्टा देखा हेलो हेलो बैकग्राउंड सेड अछि डॉट टच देखो अब झाटे जो वीडियो रे हां बांधे ओडे एडी तीन जो वीडियो रे वीडियो साइड रे देखि देबो ताक माफी बांधो केता होछि हो से तीनटा डॉट रे क्लिक करले तीनटा सुनो तीनटा तळे स्टॉप वीडियो सीडी पड़ा कोडी एटा तो डायरेक्ट एडी वर्चुअल बैकग्राउंड अछि आ ये प्लेट टू हाँ, virtual खाल background. रहि जियो ना हां वर्चुअल बैकग्राउंड को क्लिक करले हां हां तापर सेट देखेबो इमेज पे
Share Add screen image na ଅଛି। add image. ହଁ ଜାଗାଟା ଇଏ ହେଇଯିବ ରଖିବାକୁ ହବନି Laptop ରେ ଦେଖୁଛୁ ତ? ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିପାରିବ ହଁ ଲ୍ୟାପଟପ ରେ add image ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। Add image କିଛି ନାହିଁ ତ? ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଟର ସେ ଆସିଲେ ନା ହଁ ଆସିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଦେଖ ସେଇଠି ଭର୍ଚୁଆଲ ଏଇଟା କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିବନି ଆ ଭିତରେ ଖାଲି କ୍ୟାସେଣ୍ଡ ତମ ରହିଲା ଆଉ ଏଇଠି ପଡିଛି virtual background filter କଲେ ସିଆଡେ ଆଉ ପଡିବନି ଏତିକି ତମ ଗୋଡ ପାଖ ବଦଳ ହେଇକି ତମ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି ମଝିରେ ସମାନ ଆମେ କଣ ହଁ ଭିଡିଓ ଫିଲ୍ଟର ତମର ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଲେ ଏଇଠି ହଁ ସେ ସେଇଠି ପ୍ଲସ୍ plus ଚିହ୍ନଟା ଚିହ୍ନ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ ହଁ କ୍ଲିକ୍ add କର image. ସେଇଟା ହଁ add image. ଗୋଟେ ଦିଟା କରିଦିଅ गुड मॉर्निंग ଏ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଛି ନା କାନ୍ଥରେ ଦେଇଦା ହଁ desktop ର ହଁ ଡେସ୍କଟପ ରୁ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅ ହଁ 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 ମୂଷା ମୂଷି ହୁଏ ଆଉ ହବ प्रशांत प्रशांत पटनायक ये स्क्रीन चेंज करे नायक बाबू आपनकर स्क्रीन चेंज करंतु स्क्रीन चेंज करंतु स्क्रीन चेंज केମିତି ହବ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି सेटा आपन पछाड़ दियंतु कुरियन को पछाड़ दियंतु ତିନିଟା ଡଟ୍ ଅଛି ହଁ, ସାର୍ କୁହ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁହ, ତିନିଟା କୁହ। ଡଟ୍ डॉट सुनो किरण तीनटा डॉट उठा ଆପଣଙ୍କର लेफ्ट साइड स्टॉप वीडियो ତିନିଟା ଡଟ୍ ଅଛି नहीं तळे କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ नायक तळे तळे अछि देखु स्टॉप वीडियो ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତଳେ ଆଇଲା। ତିନିଟା ଡଟ୍ उल्टा आइला ଆଉ ସେଟା ମିରର ମାଇ ଭିଡିଓ ମାରନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ हाँ एबे आइला हां हाँ आ ये रे ମିରର हेलो नायक ତିନିଟା ଡଟ୍ ଅଛି ନା ଆର କୋଉଠି हेलो ପାଇବ ତ ବଡଟା କୁଆଡେ ହେଲା image ଟା କୋड ରହିଲା ଦେଖି। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो काय मोरल होनी स्क्रीन चेंज कर ବଡ ସେଣ୍ଡ ସାନ ସେଣ୍ଡ ହବନି ବଡ ସେଣ୍ଡା ଲମ୍ବା ସେଣ୍ଡା କୁଆଡେ ଗଲା नायक କାଲି ମାରୁଥିଲ କେ ହଉନି କିଛି ଏଇଟା ଧରି ମାରିଲେ ହବ ନା ସେ ସାନ ତଳେ ସେଣ୍ଡ ହବ तळे लेफ्ट साइड तळे स्टॉप वीडियो अछि ଷ୍ଟପ୍ ଭିଡିଓ ହଁ ଷ୍ଟପ୍ ଭିଡିଓ ଅଛି ତା ସାଇड ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ହଁ ସେ ବାଲି ଗୁଡିକି ଇଟା ଆଣିକି ଦେବେ ନା ତମକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଇଟା ବିଟା ଆଣିକି ଦେବେ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ बैकग्राउंड एंड फिल्टर हां ओके देखले देखो ये ना पड़ेगा ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ वीडियो डाउन ହଁ ପାଇଲ ହଁ ଚିହ୍ନ ऑस चिन्ह ସାଇଡ ରାଇଟ ସାଇଡ हाँ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଡ୍ ଇମେଜ ऑस ଅଛି चिन्ह ଆଡ୍ ଇମେଜ ଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଡ୍ ଇମେଜ ଆସିବ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ एड एटा पड़ेला इमेज मात्र वीडियो टा ହେଲେ ସେଟା ଆପଣ ବାପରେ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଯୋଉ ପେନସିଲ ଟା ଆଣିବେ ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ओके ओके ପିକ୍ଚର ବ୍ଲକ୍ କରୁ ठीक है हां म्यूट इमेज टा नंबर ଅଛି ସନ୍ତୋଷ ହେଲାନି ତମର कोडी जियो कहला अंडरस्टैंड ସେ ଷ୍ଟପ୍ ଭିଡିଓ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ ନମସ୍କାର ଆରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା पूरा ହଁ ହେଲା ଦେବାନନ୍ଦ ଭାଇ ହେଲା କିଛି ଦୁଶୁନି ମାରୁ ପୁରା ଏରିଆରେ କିଛି ଦୁଶୁନି ତମର ମାନେ ତମେ କଣ ଯେ गिरीश बाबू ଇନଭେଟ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଲା ଦୁଶୁନି ଆଉ କିଛି गिरीश बाबू हेलो गिरीश बाबू ଟିକେ କର ନହେଲେ କାଟ गिरीश बाबू ପଳେଇଲା ତ ତଳ ପଟେ ଭିଡିଓଟା ତା ସେ ରହିବ ରେ ତାକୁ ତଳେ କିଛି କଟା ହବ ନା ତା ଉପରେ ଖାଲି ବନା ହେଇଯିବ ଏଟା ପାଇପ ହେଲା पुन्हा ପାଇପ ଟା ଦେଇଛି ତମର ମାତ୍ର 20 ଆଇଲେ ଯେ ଟିକେ ଏଇଠୁ ଏତିକି କାଟ ହବ ନା पुन्हा ଏଇଟାକୁ କହିଲେ डेस्कटॉप जार ଅଛି ଆସୁନି ପଳେଇଲା
হবে না ভাই না মিটিং স্টার্ট করে দিও আরে তোমার সেড়ে নেট তো পুরো দেখু ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଜଗି ଦବା a connection could not be established त्रिपति आग हूँ समस्त को आम रिक्वेस्ट करदबा जो इमेज टा पठाई आग से इमेज टा को डाउनलोड करके आग डेस्कटॉप रे रख जो माने लैपटॉप बा डेस्कटॉप यूज करछंती आग से इमेज टा को डाउनलोड करके आपन ये रे रखंतु डेस्कटॉप रे कौन जाउ कोंती मेन पेज रे आग सेठी रख ନାଇଁ ଦେଖୁନ ତମେ କାଇଁ ତମର କଣ ଲାଗି हेलो हां नायक कुंदु मोर डिवाइस कोन सपोर्ट करनी लिखि कोटा को सपोर्ट करनी छाड़ी दे सेटा संगे लेवल तळे आसी किंतु ऊपर आसुन आडा टिके कम पके नहीं आपण इमेज को डाउनलोड करछन ना गाऊ हां डाउनलोड करी रखा है डाउनलोड करके ऊपर अपन रखछंदी तापर स्टॉप वीडियो रो जो अछि ड्रॉप डाउन लिस्ट अछि सेटा को सिलेक्ट कले सी कहउची वर्चुअल बैकग्राउंड हां बैकग्राउंड सिलेक्ट कलो बैकग्राउंड सिलेक्ट कला पर सी तळे इमेज रो साइड रे गोटे प्लस चिन्हटे दउची प्लस चिन्हटे हां प्लस चिन्ह को क्लिक करंदु व्हाट्सएप काढ तापरे प्लस चिन्हटा एड इमेज अछि ए इमेज टा को जानदु एड इमेज कलु हां तापरे बस सेती कला पर छोड़ देबे डाउनलोड हे जिवो आसुनी वीडियो तळे आछी हां हां वेंकट आसला तो केमिति हबो एटा आको इमेज टा को डाउनलोड कर दियो इमेज टा डाउनलोड करके रखि डेस्कटॉप रे हां तापर तुम देखो तळे तमरो अछि म्यूट पछरे स्टॉप वीडियो अछि जूम दा ओपन करबी हां तुम लॉगिन करछ ना तुम हां लॉगिन करछि हां लॉगिन कले देखो तळे तमरो देखो स्टॉप वीडियो मोर आइडा लगा रे वीडियो रो चिन्हटा आछि आइला चल हां मूलर कोर्स नागबू चेष्टा करूँ आम ठीक 11 मीटिंग आरंभ कर दवा हां हे परनी स्क्रीन आसु
नहीं हेई परिबो टिके चेष्टा करन हम कल रात के चेष्टा करथुल हेई पर नतला बट तापर हैला अरे से लिखुची योर डिवाइस डज नॉट सपोर्ट विजुअल बैकग्राउंड तळे कोडा कहला बाकी वीडियो हां वेंकट वीडियो को सुता आइला वीडियो को गला पर देखो से कोन देखौ देखो आइला इमरा वीडियो ले रेड आइला कट गेले हेलो रमेश सर सर नमस्कार आरंभ करिबा 11 को ना ठीक है केतबे आरंभ करियो सर सोशल डिस्टेंसिंग थाई हमर खाली मसलाडे कटा हबो ना हां हे जो काट दे पाइप तळे अछि पूरा हेलो हां सर बोलो हेलो हेलो एरिया में के जॉइन आला रमजान ओडी ये ज्ञान साहू त्रिपति कोन खाली चिकन चाकन बसले कोन हबो से इमेज टाको चेंज करो ନାଇଁ ହେଇପାରୁନି जदि हेई परनी कले बड़ दुखर विषय ज्ञान साहू जदि करि परनी हम काउ कहबू ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଲି ଯେ ମୋର ହଉନି ଖାଲି ସେ ମୁହଁ ଉପରେ ହଉନି होउनी ହଉ वो भी ଯାଉଛି होउनी ହଉନି बॉयज लबनी किछ होनी संपूर्ण चेंज करो भाई ना मत नीचे कोन नमस्कार भाई ना इमेज चेंज करो भाई ना इमेज तुम बैकग्राउंड चेंज करना संपूर्ण आदित्य हम डाउन है जे आदित्य रख दीची ବାପି ऑफिस में मैसेज हबनी अशोक भाई आदित्य देबा को आटा ऊपर ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲି अच्छा अच्छा वेरी गुड मॉर्निंग आटा ऊपर है जो डिवाइस सर नमस्कार हैं अब अशोक ठीक करने मत भाई जी सपोर्ट करनी नहीं तो ମୋର ହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରୁନି हां गेना सपोर्ट करनी डिवाइस ନା ନା वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ गुड मॉर्निंग टू ऑल नमस्कार ନମସ୍କାର नमस्कार କେମିତି ଅଛ एकदम फाइन ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ फाइन आज इंटरनेशनल वेबिनार रे बोइला आलिया लागिला ହଁ ସତ କଥା ତ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେବିନାର पूरा इया गप हां संपूर्ण हो कौन ला हां बापी हेलो तिरुपति वाले ये तो वेंकट हैला तमरो ହେଲା ଯେ ସେ ଇଏ ଗୁଡା ଦୁସୁନି नहीं तुमको सेटा उल्टा दुसतो आमु बेटी ठीक देखा जाउची ठीक देखा होची हां आज डेट के सब ନାଇଁ ନା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର नमस्कार भाईना नमस्कार नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल ବାପି ଦେଖିଲେ ହେଲା ମୋର मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट सर कोन ଲଗେଇଛନ୍ତି एकदम पूरा ହେଲା ଝାକାସ ଦିଶଛି हेलो नमस्कार भाईना नहीं वो तो तुम ऊपर करछ हैला हां जीवन भाईना चेंज करनांती आज्ञा नमस्कार नमस्कार बैकग्राउंड चेंज करलो नी आज्ञा बैकग्राउंड चेंज करियो पड़ियो समस्त बैकग्राउंड देखिले तो नमस्कार सुना नमस्कार हाँ नमस्कार 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 हरे कृष्ण सर हाँ सर नमस्कार नमस्कार कौन रे कौन करछु भल अच्छी जा भल अच्छी पिला भल अछन तो हाँ हाँ सर और काली तो पूरा फैमिली में देखिबे हो काली संपूर्ण रो पूरा डांस करो हाँ वीडियो पर देखा जीवन ना कौन गीत गाइबे
ମୋର ଗୋଟେ ଟାଇପ संतोष आइंदा अशोक ओम नमस्कार 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 फर्स्ट डाउनलोड कर काइन बस डाउनलोड अशोक सर नमस्कार। नमस्कार 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 मु आगे टिके सुट्टी जीव हेलो 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 सर गुड मॉर्निंग टू ऑल सर नमस्कार। नमस्कार 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 डियर मैन नमस्कार प्रधान नमस्कार। मोबाइल रे का बैकग्राउंड हला हेगला हमर मोबाइल रे का बैकग्राउंड हैसला काई ऑन करनो वीडियो मोबाइल हाँ, रे बढ़िया। आसला कहलो मोबाइल रे का आसला बढ़िया डीएल मैंने नमस्कार 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 थोड़ी मोबाइल रे आसुची तो डीएल मैंने आसला मोबाइल रे डीएल नमस्ते सारे गुरा आसला माने समस्त हबो मोबाइल रे चेष्टा करंदु तो बैकग्राउंड कले चेंज कले बैकग्राउंड चेंज कर जार लैपटॉप रे होनी मोबाइल रे चेष्टा करंदु ताको स्क्रीन का डाउनलोड कर डेस्कटॉप रखु दो डॉक्टर सर मोबाइल रे केमती स्क्रीन रे आनिबो कोन नंदी सेमटा का ना बैकग्राउंड ता केन होज भाई ना सेठी कोले बैकग्राउंड सेलेक्ट करल कोची मी आका इमेज ता मोबाइल रे डाउनलोड कर दबो है ना व्हाट्सएप रो इमेज ता डाउनलोड कर दबो फोटो रखियो सेटा जूम रे मोर बोल जो डाट होची सेठी कोले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर कोची प्लस फुट देची प्लस कोले फोटो देगी सेलेक्ट करियो हेलो ना कोडी के भाई ना क्यों ना कौन देखो संपूर्ण संपूर्ण टिके पूर्ण को पचार दियो संपूर्ण हां हाँ हाँ टिके पूर्ण को पचार दियो सी तुमको गाइड कर देबो नहीं है नहीं हां उत्तम बैकग्राउंड आसला अरे भाई अरे ఇది టోటల్ గా ఇది సోమంలో उत्तम రోటరీ ఉంది ఇంకొక కలిపి అక్కడ సోమంలో చామ ఇక్కడ उत्तम साउ सर डकचंदी हां अच्छा सर हां नहीं साउ सर डाकिले उत्तम को तो बतन 11 टा हेगला वी वुड स्टार्ट यस यस एबे एबे उडे कार उडे इमेज को आसुची स्क्रीन रे सेटा केमती कोन काटी होबो की किरण गोटे स्क्रीन रे गोटे आसुनी हमरो से लोगोटा आसुची हां आस्ते हां सेटा को काटी देला हमरो मेन पेज को हमें पळेबा जोटा छोटो छोटो हे आसीओ फोटो उडा को तुम काटिया पड़ियो ना हां से स्क्रीन का काटबा पड़ियो और आसला लास्ट नी मोर बैकग्राउंड आछि ना आपण बैकग्राउंड का सुंदर सेते पचास मोर लास्ट ना नहीं हां मोर एक्चुअल देखिला बाटू कहला हां ये आसला 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 इंडा घुंचे दोन सर घुंचे दले जो हां प्लगिंग कर दोन और आसला ना नहीं कराइला कर दे इधर उठेला पूरा ठीक कर दे नाइस सर हल्ला नहीं अपन को नहीं सर ही कर कौन है सर अपन कोड the device is not supporting आई गो स्टार्ट कर दबो आई गो नहीं को स्टार्ट करिए प्रेसिडेंट स्टार्ट करिए एने मीटिंग दे तरह आरंभ करबा yes let us start the meeting all members please kind attention the meeting is now called to order sirs this time our Next Bar Association's Tech Safety Committee has taken an initiative. They have created a logo or a banner or an image, which we are going to. We have already used it as a background.
So this is an initiation by the Tech Savvy Committee. So I, on behalf of all members of the Bar Association, thank all the committee members of Tech Savvy Committee. Now I would like to request you, kindly switch on your video, please. Switch on your video, but mute yourself, so that this would look lively. I would request all members, I sincerely request all members to kindly switch on your video so that we can see you, you can see us. This is an honest request. Kindly switch on and mute yourself. Who have switched on, thank you. Who has not switched on, thank you to them also. Now I invite Sri Krishna Chandra Sahu, Chairman, Greetings Committee, to do the needful. Krishna Babu, please. Thank you, President. I am audible. Hello. Yes, yes, audible. Thank you, President. Yes. Thank you, President, and all office bearers. 1 minute silence. Please keep quiet. Please, Good wishes to our esteemed members. I greet you all for today's meeting and enjoy. Now I request Ram Prasad Patra to rise the national anthem. Please. Sir, namaste. समस्त नमस्कार करुची आमे बर्तमान नेशनल एंथम टा पढ़िबा किंतु पढ़िया पूर्व आज 12 होची शनिवार आज तिथि होची आषाढ़ शुक्ल द्वितीया 26/6/2021 आपण परिवार वर्गर विश्ववासी समस्त मंगल कामना हो मो बर्तमान नेशनल एंथम दोची प्ले करुची आपण माने टिके स्टैंड अप हेबा हम समस्त स्टैंड अप हेबा Like out, stand up, please. Pradeep. All members, please stand up. Annadev. Stand up. Stand up. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Please sit down. All of you sit down. Over to President, please. Now I request Prabhat Kumar Mishra for warranties. Prabhat Kumar Mishra, please. Prabhat Mishra, unmute karo. Yes, sir. Namaskar, sir. तमरो वॉइस टा ऑडिबल होउनी आउट के जोर रे को तमर से जो ऊपर येटा काट दियो टपाटा कर दीजिए हां आउट के जोर रे ताले को सुना जाउनी यस सर सर हां को पूरा मरी रे पहले मुद्दा मरी सर आराम करिए सर Yes, yes. Let us stand up for 1 minute for world peace and to keep us safe from deadly corona and just coming for Delta virus. Once again, we will pray for 1 minute for heavenly peace of Murali Krishna Sahu, who left us on 1st June 2021, father of our member of Dayanidhi Sahu. Let us start, sir. Okay. Stand up, please. Stand up, please.
1 minute over हेगला बोले कृष्ण बाबू Okay. कृष्ण बाबू आपण म्यूट अछंती कृष्ण बाबू म्यूट अछंती अनम्यूट करंतु हाँ हेलो Okay, over sir. yes thank you Prabhat हाँ कृष्ण बाबू प्लीज कैरी ऑन I request our Thank you, all of you. Girish Mahapatra, Vice Chairman, to greet our members on his birthday. Please, Girish Mahapatra, sir. Girish, you are not audible, bhai. Hello. Yes, now Yes, very sir, much audible. yes. गला जून मासरे जून आज दिन भितर हमर 20 जन मेंबरकर बर्थडे सेलिब्रेशन हेछि सेमाने होचंती सीएच त्रिपति पात्र प्रशांत कुमार पटनायक प्रदीप कुमार पंडा किरण कुमार महांती एडवोकेट मनोज पाढ़ी रंजन कुमार साहू मनोज कुमार प्रधान जी रामनारायण पात्र दुर्गा प्रसाद पाढ़ी सीए वी अजित कुमार राजू बिरंची नारायण पात्र रविंद्र कुमार पाणिग्राही सुशांत कुमार पंडा अजित कुमार प्रधान के शेखर कुमार मनोज कुमार मिश्र मनोज कुमार पटनायक पी देवानंद पात्र रश्मि रंजन पाढ़ी एंड देवेश मिश्र and on behalf of Tax Bar Association Greetings Committee, I just wish a very happy birthday and all the best wishes in their life for the forthcoming years. Thank you, Greeting Committee. Thank you. Thank you, sir. Hello. Hello. Over to Chairman. Thank you, sir. I request once again to our Ramjit Kumar Botso to read the marriage anniversary observed by our members. Please, Ramjit Very Botso, good. sir. Very good morning to one and all. Thank you. A warm good morning. This month, June till date, the following members are celebrating or have celebrated or going to be celebrating their marriage anniversaries. The names are Lakshmi Banta Nayaka, who celebrated his anniversary on 4th of June, Simanchola Maharana, 20th of June, V. Ajit Kumar Raju, 21st of June, Ranjan Kumar Sahu, today. Many congratulations, Ranjan Kumar Sahu, today, 26th of June, Ajit Kumar Pradhan, 29th of June, R. Biranchi Narayan Patra, 7th of June, and B. Venkat Kumar Patra, 20th June, and our esteemed senior member T.V. Rao on 17th of June. Thank you. Thank you, Botso, sir. Now Mr. President should continue the meetings. Thank you, Greetings Committee. Thank you for this best team effort. This Thank is you. called a team. We all should work like this. Thank you so much. Hope all members have liked this presentation, the presentation of Greetings Committee, and we would now continue this type of presentation now from now onwards. Thank you so much, committee members, Greetings Committee members. Once again, I thank you. Thank you. It's all right. Now, may I request our ever smiling secretary Tripati Patra to kindly read out the minutes of the last meeting. Thank you, President. The minutes of 8th General Board meeting held by Zoom on data 9th May 2021. Meeting was called to order. National anthem was invoked by all. 1 minute silence prayer was observed for world peace. Minutes of the last General Body meeting were confirmed. The President conveyed good wishes to the members whose birthday or anniversary falls in the month of May. On the eve of Mother's Day, President conveyed a heartfelt wishes to all beloved mothers of the world by reading a beautiful sign. Also, Sri Purnachandra Hota read an Odia poet. President asked the Treasurer Sri Ranjan Kumar Sahu to present his report on collection of subscription and group insurance premium. President invited Sri E. Ashok Kumar, Vice President, to introduce Sri Arun Kumar Sabatsa. President invited Sri Sabatsa to address the House on Financial Budget 2021. The deliberation was very nice, educative for us. Also, we got adequate knowledge on budget in short time. Many members participated in the discussion. Vote of thanks offered by Joint Secretary Sri K. Shekhar Kumar. Then the meeting was adjourned. Now over to President. Thank you so much, Tripati. Should we confirm the minutes? Yes. Just so you, okay. Thank you so much.
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରିବି I would request our tech savvy committee Kiran are you there? Kiran Uttam Uttam you and Kiran are co-hosts तो तमे खाली टिके देखुथिबो जदी ए भितरे कहार टिके माने बाय चांस भूल भाल रे जदी अनम्यूट हे गेले कोन हेले काइंडली म्यूट देम हां ठीक अछि थैंक यू सो मच now members as you all of know that in the last meeting Ganjam Bar Association ro executive body member pai boli we had unanimously selected Sri Sasank Shekhar Das our past secretary for the executive body membership and accordingly letter was written and handed over to the office bearers of Ganjam Bar Association and they have accepted it gladly. They have kept our request. They have selected Sri Sasank Shekhar Das as an executive body member of Ganjam Bar Association. So thanks to Ganjam Bar Association and congratulations to Mr. Das for this assignment. Apart from this, without our saying, they have also selected our secretary, our smiling secretary Tripati Patra as a special invitee. एटा आमे ताको कहि नथिले but they have done it so moto शशांक शेखर दास को रखिबा सहित से माने हमर सेक्रेटरी को भी से माने स्पेशल इनवाइटी हिसाब रे रखिचंती this is a great honor for our association so I congratulate Tripati Patra for this assignment and once again thank the Ganjam Bar Association for this gesture thank you so much now appraisal about AIFTP finance scheme आपने समस्ते जानिचंती ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स रो एबे सेमाने गुटे सेकंड वेव पई दे हैव एडॉप्टेड ए स्कीम दैट इज कॉल्ड फाइनेंस असिस्टेंस स्कीम COVID-19 particularly for the persons who are affected in the second wave not for the first wave but for the second wave तो सही हिसाब रे हमरो दुईटा मेंबर हैव बीन बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम दु जण पाइचंदी जणे पाइचंदी 35000 आउ जणे पाइचंदी 20000 but actually we are instructed not to spell the names not to disclose the names AIFTP रो सेमानकर गोटे करिचंदी जो स्कीम करिचंदी से स्कीम रे दे हैव इंस्ट्रक्टेड अस जे जो मानकू ए जो फाइनेंस असिस्टेंस दिया जिवो सेमानकर नाटा तमे कोठी भी डिस्क्लोज करिवो नाही so we are not disclosing the names just informing you that there is a scheme available for all of us who has been affected due to this COVID second wave जदि भी कार सेमती कोन थिपो सेटा को आमे प्रोसीड करई परिबा Now, Ajiro main topic now GST on works contract. As all of you know that since the inception of GST, we have been suffering like anything. The professionals, they don't have any family life. They don't have anything. खाली बर्तमान GST आसिला परे घंटी हबा छड़ा आउ किछि नाही. तो एई भितरे हमरो बहुत member they wanted to have a discussion, an elaborate discussion, particularly on the topic issues of works contract. तो सही हिसाब रे हमरो indirect taxes committee की आमे माने request करथिलु indirect taxes committee has taken a lot of pain हमरो chairman vice chairman all members से माने सब मिसिकरी बहुत pain नै कि they have prepared for this topic तो आज हमरो indirect taxes committee they are going to present this but before they start their presentation let me inform you we have today with us our senior most member Sri Arun Kumar Sabat Sabat sir, are you there? Ashok Bana, can you find Sabat sir here? बापी अछंदी Sabat sir actually Sabat sir रहिबाटा is a blessing for us Sabat sir is a माने से तो हमें ताको विषय बेसी किछि कहि परिबानी but गोटे हमरो speaker meeting रे having Sabat sir amongst us is a great thing. So I would request Sabat sir before our indirect tax committee starts its presentation, sir kindly bless our indirect taxes committee with few words, please. Sabat sir.
Morning to everybody. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Morning. In this COVID period, it's not becoming possible for all of us to meet in person and only meet through this Zoom meetings. And last annual general meeting that I was a speaker, so that also when it was reminded, I felt that today we should have been talking somewhere meeting, but this COVID-2 has taken us off from this personal meeting. Okay, I want to share that I have been, on various seminars and then webinars, and there's our institute but the way our Barampur tax bar is active, it is laudable. And some topic of importance is being discussed each time you people meet. And I'm fortunate also to be part of that as a co-opted member, as a life member. So today's topic is, as stated by Dr. Ranjit, is very, very important in every professional's life, whether he's a chartered accountant or whether he is an advocate, tax practitioner, etc. Our clients face enough problems in this. So choosing the topic on works contract and the GST has been a very, one of the best topics selected for the AGM on this occasion. It would have been a pleasure for me to sit through and have discussion, but for my meeting with one client is fixed at 11:30. They are coming from Puri. 11 o'clock they were to come, but they are on the way. They are reaching in about 5 minutes. So I just said that all the best for the to be discussed. I have been requested that related to for discussion on 194 AA and CCE. Things which have come related to TDS, TGS, and income tax return not filed, then how much is to be deducted, etc. So I told Ranjit Bhai that I will be away to Bangalore and 5th and return on 10th. That is why anytime after the Rath Yatra, for me to initiate a discussion on this important item. From 1st July, 194Q is getting started. Manoj, tomorrow disturbance hoji Manoj. Kiran, kindly Manoj. All of them come here. Kiran. તમે મ્યુટ કરી દો ને સમસ્ત କରୁଛି Kiran, be careful please. जार टिके voice आस्तु ताको kindly mute कर दियो. Suppose sir please continue. ठीक ଅଛି हाँ ठीक ଅଛି CPDT Sapot sir, actually I have muted all. Kindly unmute yourself, sir, please. Sir, टिके unmute कर दियो. Okay. Now, ठीक ଅଛି ତ? sir. सुना जाउची ना? Sir, बढ़िया सुना जाउची sir.
Oh. Amendment 194Q 2061H, then 206 AB, 206 CCA, and 206 A, 197 kon jai paribo ki all these matters ku vis-a-vis the latest which have come in the 2021 budget and 1st October 20 ki jo astila 2061H. Ya upare gote combined discussion we should do it, and before discussion itself, some paper which I am preparing for my clients, that I will, I would have sent it so that people would have read it and then ask whatever. Rath Yatra pore, do not. Okay. Sir. Thank you very much, and I discussion as well. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Thank you so much, Sabasa. Thank you so much. We would have loved to have you here till the end, but as you have said, you have an urgent meeting with your client. So, sir, you are at liberty to leave, but your blessings, your few words means a lot to us, sir. This is nothing but an encouragement to us, sir. Thank you. Thank you so much again, sir. Thank you so much. Kindly keep blessing us. Everybody for good health and also wealth, because this pandemic days mein paisa nahi milta hai, and so this pandemic will be reversed because you are in A class city and we are in B class. B category bol ke Bhubaneswar, because Khurda is the highest in the which is coming. Khurda, Jajpur, Tinda mise do bole more than 50% positives are coming from these three places. Right. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'll take leave. Right. Now the proceedings are handed over to the Indirect Access Committee Chairman, Chairman P.K. Naik, sir. P.K. Naik, sir. Hello. P.K. Naik, sir. Yes, I'm here. Sir. Now the proceedings are handed over to you, sir. Please carry on. Okay, thank you. Jai Jagannath. Thank you, President, giving us an opportunity to share our views and solve the problems among us. First of all, I request our Vice Chairman, Gyanasau, please give a highlight on the present notifications and amendments. Please, Gyana. Hello. Okay, thank you, Chairman. Am I audible? Hello? Yes. Yes, man, you are fully audible. Okay. Thank you, Chairman. Thank you, President, Secretary, and the Office Bearers of the Tax Bar Association, Barampur. This is, of course, this is a national style of webinar being organized by the help of Tax Service Committee. Thank you again. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 1st ଜାନୁଆରୀ 2021 ରୁ 1st June 2021 ଯାଏଁ total 27 notifications have been issued. I am not going to highlight all the notifications. Rather, I will highlight all those notifications which are important for us. Now, 1st January 2021, notification number 1. It is regarding if 2 months of 3B return is not filed, GSTR1 cannot be filed. First. Then notification number 5, published, issued on 8th March 2021. E-invoicing. This is regarding e-invoicing.
Earlier, the threshold limit was 100 crore, but now it was reduced to 50 crores. Then, yes. Then on 27th April, notification number 7, companies which were earlier were filing their returns by using DSC were allowed to file their returns up to 31st May 2021 through EVC. Then this date was again extended to 31st August 2021. Now, there are several notifications regarding extension of due date. Actually, this is not extension of due date, but this is regarding waiver of late fee, reducing of interest, etc. So, there are so many notifications. I am without going to the specific notification. I am just highlighting for taxpayers having aggregate turnover more than rupees 5 crores. March is already gone. For April, the due date has not been extended, but late fee is not late fee is waived up to 4th June for the month of April. Up to 4th June, late fee is waived, and from 21st May to 4th June, interest will be 9%, and from 5th June onwards, the interest will be 18%. For the month of May up to 5th July, there will be no late fee, and up to 5th July, the rate of interest will be 9%, and from 6th July onwards, the rate of interest will be 18%. Similarly, for QRMP dealers, April, for the month of April, it's 9th June, 9th June up to 9th June, there will be no late fee. From 10th June to 9th July, it will be 9% interest, and from 10th July onwards, it will be 18%. For the month of May, up to 10th July, there will be no late fee, and from 11th July to 25th July, the interest rate will be 9%, and from 26th July onwards, the interest rate will be 18%. GSTR 4 for the month of March has been extended up to 31st July. Then ITC 04 is also due date is extended up to 30th June. So this is very important because 30th June is just approaching. So ITC 04 must be filed for the year 2021. I have already told GSTR 1 date for the month of April. GSTR 1 date is 26th May, and for the month of May it is 26th, that is today. For IFF, those who are quarterly QRMP coming under QRMP scheme, and if they intend to file their B2B invoices, then for the month of April, their date is 28th May, and then for the month of May, it is 28th June.
Then there are several other notifications. There are some red notifications after conclusion of 43rd council meeting. They are not required as much as for our area. But Odisha has issued one circular regarding on 16th March 2021 regarding suspension of registration if there is mismatch of 3B and GSTR1 and there is ITC mismatch between 3B and GSTR1, then the RC can be suspended and notice can be issued, and that will be replied within 30 days. Otherwise, the RC will be cancelled. Then another issued on 25th February, standard operating procedures for provisional attachment. This is very important. The SOP says there will be provisional attachment if there must be pendency of a proceeding and the commissioner must have formed an opinion. This is very important. And the commissioner must have formed the opinion on several grounds. That is, nature of offence, amount of revenue, established nature of business, extent of investment in capital assets, and more importantly, reasons to believe that the taxpayer may dispose of or remove property if there is no provisional attachment. So with this, I conclude. Works contract is a very vast subject, very complicated, and the AAR and the AARs are making it more and more complicated. One state says something, it interprets in a different way. Another state or another AAR interprets in a different way. So since this is a very vast subject, now I request our chairman to speak on works contract. Thank you. थैंक यू ज्ञान बड़ा सुंदर भाव में आप अमेंडमेंट्स एंड नोटिफिकेशंस गुड़िक बुझे पार्टी केते बा पढ़ा जदि 2-3 मास भितर एतरा नोटिफिकेशन एंड अमेंडमेंट्स रहिबो ताले केते बा अमेंडमेंट नोटिफिकेशन ऊपर आमे चर्चा करबा ता बुझी होनी एनीहाउ First of all, I again thank to Mr. President Ranjit, Secretary Tripati, our committee members Gyana, Vishwajit, Vinod, Pradeep, Sampurna. They have cooperated me to prepare, and they have given me a chance to speak something about work conduct, a very complicated chapter in the GST era. Friends, आमे मारे जानी छे, I am audible. Hello, Jana. You are very much audible, sir. You are very much audible. Okay, thank you. वो 2 मिनट स्पेयर करबी तापर टॉपिक आरंभ करिया आम देश रे ओनली 10% लोक डायरेक्ट बा इनडायरेक्ट टैक्स सहित डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अच्छा जो माने कि ट्रेडर्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स others 90% of our population do not know about the taxes. सेमान को मन भितरे जहाँ पसाई दिया जाए खुशी दिया जाए जेटा सहज एटा भल एटा अधिक ज्ञानकर डिस्क्रिप्शन रो आपण बुझी परथिबे
जे thousands of notifications, thousands of amendments, circulars issued by the department within these 3 years. गोटे मजा कथा भाई आमे रास्ता रे गला बेले किछि स्कूल गोइंग स्टूडेंट को मिसिले we have met some students school going students 12 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष ताको पचरिबा अरे भाई ठंडा का मतलब क्या होता है ठंडा का मतलब क्या होता है आपण माने कहतु ठंडा का मतलब क्या होता है एनीवन definitely yes tell me inner माने बॉडी रो इनर रो आउटर दीटा तम ठंडा देबो पिला माने निश्चित भाव ठंडा का मतलब कहले से माने कोन मोहर पटकिना बाहर पड़े कोको गला एम आई करेक्ट और नॉट काहे कि टीवी रे देखुछथि कोको गला अमेरिकन धरछि मोबाइल रे यूट्यूब रे देखुछथि जे धोनी कोका गला देठी ठंडा का मतलब कोका गला सब ठंडा का मतलब कोका गला ताको मुंड रे पसई दे दे ठंडा का मतलब शरबत नहीं ठंडा का मतलब लस्सी नहीं ठंडा का मतलब पानी नहीं ठंडा का मतलब कोका गला ठीक ठीक सेमती इस सरकार जीएसटी मीन्स सिंपल एंड गुड एंड सिंपल ये जो फैशन देशवासी मुंड रे भरी कर देचंती विशेष करी आमर जनप्रतिनिधि मानकर मुंड रे भर्ती कर देचंती एमएलए होंतु एमपी होंतु आपण देखंतु विगत 3 वर्ष भितर बाहर जहा कांदना काउंचंती कांदुचंती जणे बे कई पार्लियामेंट एमपी बा एमएलए जीएसटी रो कॉम्प्लिकेशन विषय गोटे पद पार्लियामेंट रे उठेचंती बा असेंबली रे उठेचंती सेमानको मुंड रे गोटे धारणा हो जाइछि जीएसटी मीन्स गुड एंड सिंपल जब तक छोट छोट पिला मुंड रे भरी कराई ठंडा का मतलब कोको दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछता है जो नहीं खाया वो भी पछता है हमें जानी छु ता कौन हो एनी हाउ यू हैव टू कम टू द चैप्टर फ्रेंड्स today we are going to discuss about the very difficult chapter क्यों नॉन ऑफिशियल डाटा रो जणा जायछि विगत 6 मंथ्स भितरे विदिन 6 मंथ्स जेते अपील फाइल करा है सेथुरु 70% अपील रिलेटेड टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट एथिरु बुझी पड़थिबे जे ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट केते इंपोर्टेंट अपील कथा कहली गोटे मजा शेयर मन पड़छ बहुत बढ़िया शेयर अच्छी कबीरा कहे इसी संसार में सबसे खुश वकील कबीरा कहे इसी संसार में सबसे खुश वकील जीत गया तो फीस मिला हार गया तो अपील जीत गया तो फीस मिला हार गया तो अपील सो आमे जिते कॉम्प्लिकेशन होथिबो जिते अपील आसियो आमे खुशी रहिबा से कथा बड़ कथा नाही किंतु कॉम्प्लिकेशन जिते कम होबो हमर बोझ से कम ओके वी विल स्टार्ट work contract definition clearly mentioned in section 2119 it says work contract means a contract of building construction fabrication completion irrigation so 14 items 14 items
It is a supply in nature. It is a supply in nature. Start SBC service code 9954. I'm not going to detail in the definition. I am telling you 3 points. को जिनिसटा को आमे वर्क कॉन्ट्रैक्ट हिसाब रे नै पारिबा जदि तीनोटी कंडीशंस फुलफिल करछि ताल ताको वर्क कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 it must be a supply, there must be a supply. Number 2, there must be transfer of goods. Number 3, that must be the work must be for the immovable property. If 3 conditions are fulfilled, then we will say it is work contract. It is no doubt it is a composite supply. Work contract is a composite supply. So my brothers, you see in schedule to entry number 5B tells you about the supply of service. Let us consider I wanted construction of a building. PK Naik, एक building sir camera ready के sir okay sir camera ready के sir हाँ okay okay sir. Okay, let us start. मु गोटे घर काम करने को जाऊँ. Let us consider PK Naik is going to start a construction of a building and I have engaged a contractor. So that contractor employs his labor, service there. He supplies goods there and he is working for a immovable property. So this work is called work contract. No doubt. So one thing is there, if immovable property is not connected there, then it cannot be said the work contract. You remember it. Let us consider in part area, there is both immovable property and movable property is connected there. But in gist era, there is no movable property is separated and it is totally labor charges and service charges. But in work contract cases, immovable property must be there. Okay. So गोटे प्रैक्टिकल जिनस जी आपण पाखक जो क्लाइंट पाखक जो गोटे क्लाइंट आसूची प्रैक्टिकल पॉइंट प्रथम आपण पचारुछंती आपण कोन काम करथि से कोइ व्हाट कॉन्ट्रैक्ट आपण सेकंड क्वेश्चन राइज करूछंती जे आपण कोठी काम करथि आपण कोठी काम करथि. So place of supply, place of work, कौन काम करते, कोठी काम करते. से समय रे गोटे क्वेश्चन आसियो रजिस्ट्रेशन. Place of supply and registration both are attached to each other. Okay. प्रथम जतलो आमे रजिस्ट्रेशन को जिबा, रजिस्ट्रेशन आमे जतलो करिवा को जिबा आमे देखिवा जे ये रेगुलर स्कीम रजिस्ट्रेशन करिवा ना कंपोजिट स्कीम रे कॉलेज चली. My first question to all my brothers, whether composition scheme is available to work contract or not. Please, I am looking your chart. Please answer this. Both, sir. Anyone? I am looking your chart, please. Yes, yes. Yes, but I am both कर परिया composition scheme रे and regular scheme रे कर परिया. Yes, but yes, yes. as per
Jana, yes, yes, up to 15 lakhs. Yes, yes. Thank you. I'm very much appreciated. Okay, thank you. Most of my brothers have answered yes, yes. आमे both रे करि परिबा, composition रे भी करि परिबा, regular रे भी करि परिबा. Okay. Okay. From before 1st April 2019, it was not available, but after April 2019, it is available. Up to 50 lakhs of work contract you can. So not only work contract, any supply of service you can register under composition 6 scheme under section 10. Okay. So next we go. Let us consider P.K. Naik is a contractor. His place of native place is at Barampur, Orissa. He has permanent GST number also at Barampur. He has taken a contract at Ichapuram, Andhra Pradesh. So my dear friend, my second question to you, whether registration is required at Ichapuram, Andhra Pradesh or not? Tell me. I am looking your chart. Thank you, my brothers. It is it is not mandatory. It is not mandatory. आपड़ो सेठी नंबर नहीं परिवे नहीं न पारे मने करंतु मो 31 टा स्टेट रे 31 टा नंबर नहीं करे काम करूची मो 31 टा स्टेट रे कोन नंबर नेबी की जोटी मोर रिक्वायर अछि मो सेठी नंबर नेबी सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक रजिस्ट्रेशन एट इच्छापुर सो here one thing is there जदि आपण रजिस्ट्रेशन नंबर सेठी नेबे कौन हम जदि न नेबे कौन जदि आपणकर सेठी रजिस्ट्रेशन नंबर नेउ नाहंती वी हैव नॉट रजिस्टर्ड एट आंध्र प्रदेश देन आपण जदि कोनोसी जिनिस इफ एनी मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एट आंध्र प्रदेश if any material is required to Andhra Pradesh आपण केवल डेलीवरी चालान रे ट्रांसफर इन दे पछड़ बाहर नहीं ये टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं दे प्लीज कारगर होनी भाई प्लीज साउंड लेस करो आपण को जदि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेठारे अछि ताले आपण टैक्स इनवॉइस करी जेमती की जिनस आप ट्रांसफर करते एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन you can transfer your goods from Barampur to Ichhapur. So the question is आपनो माने जानिथिबे what is distinct person? Very person is having one register established in one state and other establishment in the other state. Both are treated as separate distinct persons. So, my point of view, जदि आपण को रजिस्ट्रेशन नंबर आंध्र प्रदेश रे अछि ताहाले आपण जेमती वे बिल एंड इनवॉइस करके टैक्स इनवॉइस करके आपण पठि पारे जदि आपण को रजिस्ट्रेशन नंबर सेठारे नाही ताहाले आपण केवल डिलीवरी चालान रे वे बिल करके पठि पारे I think you are clear about the 2 points, my registration and place of supply. If any doubt, any question about this, you can put me now. Mr. Biswajit, we have received some, my brother,
Biswajit Tripathi. Hello. 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 Biswajit, we have received Good some morning. questions regarding this. Sir, more good a question ଅଛି. Suppose a work contractor received a running bill on March. Hello. Biswajit, yes, yes. ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? Yes, yes. Suppose a work contractor received a running bill, signing a running bill on 31st March 2021. Biswajit, it is related to time of supply. Please, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର yes, 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 yes. Tell me. ସେ କଣ ହଉଛି ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ପାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଛି ଏପ୍ରିଲ ରେ TDS not uploaded in March. Hello. Yes, କୁହନ୍ତୁ. 31st March रे रनिंग आमे बिल इश्यू करछु सेमाने हमको बिल देचंदी से भी रिसीव करछि किंतु कोन हेछि द TDS शुड बी क्रेडिटेड TDS रिटर्न द फाइल हेछि एप्रिल रे तार अमाउंट देखाउछि मार्च रे मो से रिटर्न फिगर देखेबी ना एप्रिल रे देखेबी. Biswajit, please give me some time. It is a question related to time of supply. ठीक. This question is related to time of supply. I have not come to that point. I have a question, sir. Can I ask you? Please me a question about the place of supply. Yes, time of supply, sir. Yes. I want to ask you some time of supply. Sir, more one question thila. Suppose mo registered dealer and mo registration करछि on Gujarat. Hello. Yes, tell me. Gujarat करछि. बर्तन मु सेही बर्तन बरमपुर रे गुटे मोर काम मु पाइछि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट काम गुटे पाइछि ता पई मोर रजिस्ट्रेशन बरमपुर रे करबी सेही मु किछि मटेरियल बरमपुर ट्रांसफर करियो चाहूछि. Yes. Can I apply a new fresh registration Barampur jurisdiction or not required? Second question is how I transport the goods from Gujarat to Barampur, sir. First one, registration is not mandatory. You can register here or not. That is the will of the your client. If fixed establishment is here, if fixed office is here at Barampur, you can take registration. It is not mandatory. I have categorically told you about that one thing. If you have registered at Barampur, then the goods can be supplied as a distinct person, supplied to a distinct person with e-invoice and take government waybill from Gujarat. If there is no registration at Barampur, no problem at all. You can transfer your goods by delivery chala. No problem at all. Sir, may I intervene? Yes, yes. Actually, problem kon habo? Amaro ite sir, manakara Gujarat ro dealer. It is our establishment nahi. So suppose she would a big works contract nechi. So seti pai she jodi pathebo kouti pathebo. Suppose gote government ro kaam she nechi. So direct he cannot transfer it to the by delivery channel. It cannot be transferred to the government. So it is for the sake of convenience we have to register here. Yes. Yes, it is not mandatory, but it is for the sake of convenience we have to register here. Yes. I am 100. You are 100% correct. For the convenience, you can take registration here, but it is not mandatory. Purna, I think clear about this. Let us consider. I am telling one example here. Suppose a work contractor registered in Orissa and he transferred 80 lakhs goods to the Andhra Pradesh who is not registered there. And 20 lakhs he purchased in Andhra Pradesh also. What will be the consequence for the 20 lakhs? Tell me. If registration is not there for that 20 lakhs,
Let us consider you are working something at Andhra Pradesh. For the small things you can't transfer from Barampur, so you must purchase at Ichapuram. So in this junction, you can purchase there with the GST number of Odisha by paying IGST. But if you have a number at registration number at Ichapuram, then you can purchase your goods with the CGST and SGST. Another important point I am telling you. One question came to me. Yes, what is that question? I'm reading that question. नायक आपनकर लैपटॉप टा टिके तळगु करंतु आपनकर येटा सो दैट स्क्रीन टा हां अच्छा हां ठीक अछि visible. How one of my brother has sent a question to me. A builder, suppose X, appoints a contractor providing service. Let us consider PK Naik is going to renovation of his office building. So PK Naik has supplied all the materials, including cement, including bricks, sand, colors, what may be required in the materials. The work contractor has performed his service. Whether it comes under work contract or not, tell me. Please, I am looking your chat box, please. And again, please repeat. Again, repeat. Yes. I am a tax consultant. I have an office at Barampur. I am started my renovation there. I have supplied cement and other materials to the contractor. I have asked the contractor only to make the labor work there. This contractor whether comes under work contract construction or not, tell me. Yes, sir, he comes under the work contract because he supplied the service. It can't be said as work contract because it is not a transfer of goods. I've said three things. One thing is supply of service. Second is supply of goods. Third is it must be implied to a immovable property. Jnana is correct. Jnana is correct. And other, my brother is correct. Correct. Okay. Okay. I'm looking the chart. Okay. So से इनकम टैक्स जीएसटी सब कर सब से तो मीटिंग करछे कंडक्टर आगे दिन बस करछ hello. Now गोटे क्लाइंट आपण पाखु आसीची ता ऊपर आपण डिस्कशन कले जे कोन करछंती ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट करछि तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कोन दरकार कोठे करछंती से सब डिस्कशन आप कले ता ऊपर गोटे बहुत बढ़िया पॉइंट डिस्कशन करिया जोटा कि हम पे बहुत दरकार मैं तो मोड क्वेश्चन पतरबी को ऊपर सर माने ए मु ए जॉब कॉन्ट्रैक्टर ऊपर पतरबी कोन माने रिलेटेड टू ओनली दिस वन चैप्टर टा को चैप्टर कोन ए बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर ऊपर सुनो आसीबा बोरवेल दा होची प्रीडोमिनेटेड अर्थ वर्क आमे सेठी को आसीबा आगु को आसीबा ठीक है ओके ओके कैरी ऑन आमे जतले रेट ऑफ टैक्स पढिबा से समय आसीबा कैरी ऑन ओके आमे गोटे चैप्टर क्लियर करिया ओके किछ खराब भाबंतुनी वी आर गोइंग टू नो प्रॉब्लम नेक्स्ट सो जेतबेले गोटे कॉन्ट्रैक्टर आपण पाखु आछंती आपण नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पचरचंती जे आपण की प्रकार वर्क कॉन्ट्रैक्ट करछंती whether you are doing the building work or performing the bridge work or performing the road work or performing the borewell work, what type of work you are doing? This is your third question. Am I correct? So tell me, let us consider, he says
Let us consider he says, I am performing the building work. Your next question should be, what materials are you using there? ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କଠୁ କେବଳ ଖାଡି ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ର ବିଲ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ କିଛି ବିଲ୍ ମିଳୁନି am I correct or not ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ କୋ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି ବ୍ରିଜ କାମ କରୁଛି ନା ଘର କାମ କରୁଛି ନା ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛି ସୋ जो ପ୍ରକାର ସେ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ताठू ही आदाय करंतु कितने percentage cement is required, how much percentage rod is required, how much percentage bricks required, so and so. Then you can maintain your purchase register correctly. Am I correct or not? This is very important, my brothers, because you will face very difficult at the time of assessment or at the time of audit if you face this in future. Thank you for your comment. Okay, next. So we have to see one thing is there एबे कोन करछोती सेटा भी उठ देखिबा जड़े कॉन्ट्रैक्टर खाड़ी और सीमेंट बिल दे देला हम भाई माने जेतले ऑडिट करछोती सेतले कोन करछोती आ बळक आइटम को यूआरटी परचेज रे विषय दोछन किंतु my brothers it is not correct one you go at the notification number 7 please note down I am telling a vital point please note down please go to notification number 7 2019 dated 19th March 2019 the rule of RCM changed slightly for the contractors. Please repeat the notification. Notification number 7 2019. 7 up to 2019. Dated 29th March 2019. Effective from 1st April 2019. There are specific three kinds of supplies that required to pay the tax under RCM. What are they? First says, if value of supply from registered is less than 80%, please, very important point, you note it. If value of supplies from registered is less than 80%, the value of supply from registered is less than 80%, 80. Then the contract has to pay GST at the rate of 18% on reverse charge basis on all such invoice supplies for the shortfall amount. आपणकर यूआरटी परचेज रो सीमा होची 20% ओनली जदि कोनसी कॉन्ट्रैक्टर 20% टू अधिक 20% टू अधिक जदि यूआरटी परचेज करूची जेते अधिक करिची सेही अमाउंट रो आरसीएम रे से डिपॉजिट करिया को पड़िबो 18%. रिमेंबर नेक्स्ट you are the purchase on cement irrespective of 20% limit आपण सीमेंट गोटे बस्ता किनले मध्य you are the purchase आपण आरसीएम रे डिपॉजिट करियो पड़े. Number 2. Number 3, if you purchase any capital goods, जदि कौन सी capital goods आपण यूआरटी परचेज करछन्ते अनरिस्ट्रिक्टेड डिलेट परचेज करछन्ते आपण को आरसीएम रे टंका भरिबा को पड़े. Remember this point. So my dear friends, purchase ledger is very important for your contractor.
You remind this one. So ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଜିନିସଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏନେ ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ପଚାରିବି। Can a Nago, repeat again. को विषयटा? Last. अच्छा अच्छा yes. Notification number 7 2009 issued dated 29th March 2019 effective from 1st April 2019. Three kinds of supplies are there where RCM is imposed by the government. What are the three? For the work contractors only. Number one, if you purchases more than 20% from URD, unregistered dealer, then you have to pay the tax on RCM for that excess purchase of 20%. Are you clear? Let us consider you are performing one works. You have purchased 1 lakh raw material from unregistered dealer. For that 1 lakh, you have to pay RCM. I think you are clear about this. Next, if you have purchased cement from URD, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ପରଚେଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ RCM ରେ 18% ସରି ଯେତିକି ଟैक्स ଅଛି 28% ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ये ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ କିଛି ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ପରଚେଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣ RCM ରେ ଟैक्ସ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। Am I clear? Please tell me yes, then I shall proceed next. Yes. My question, जड़े कंपोजिट डीलर ठू गोटे कॉन्ट्रैक्टर परचेज करि परिबो ना नाही, जदि करि परिबो कोन हबो? Whether he can purchase from a composite dealer or not? Yes, he can purchase. Thank you. Yes. It is a mercury of law. Indian Constitution says there should be no double taxation. But what can you say? There is the mercury of law. The person is paying tax at the time of purchase, again paying tax at RCM. So it is the mercury of law. It is possible under GST regime. যদি সে মানে ये ডিলার কম্পোজিট ডিলার পারচেজ কলা তবে RCM আচ্ছা কম্পোজিট ডিলার যে ট্যাক্সটা দিতো সেটা হবে না? No setup is there in RCM. Only RCM will be set up. Means partly cascading. RCM the setup hobo. No, partly cascading. Yes. Naigo, I have a doubt. Yes. Unregistered dealer to 20% more than 20% helle RCM like you. Yes. But the composition dealer is not coming unregistered dealer. So only the ITC is not able. But why should he pay RCM? Is that there is any notification? Yes, very vital point. You have put a very vital point. Jana, I may appreciate you. Very vital point it is. That is why I am telling. It is a mercury of law. It is a litigated case. It cannot be decided by us how it will be. That will be decided by court only. Because any purchase from the law says any purchase from the composite dealer that will be treated as an unregistered purchase. So I can't. Okay. Then we shall come to accounts. Section 35 says every registered person shall keep so and so books of account. I don't want to discuss each of them. I'm going to the last point. He says for the work contract what particular books of account should be required. You remember my point, my dear friends? There are
5 points are there, but out of that 5 points, 3 points are very important. I am going to discuss it. You require to maintain the name and address in project wise. Let us consider you are working in 5 projects. So you have to maintain the books of account for the 5 projects, not a single account. Remember this one. Number 2, receipt of goods for the particular project. Number 3, utilization of goods for that particular project. So my friends, you have to, before maintaining the accounts, you have to look these 3 points. This is very important for your assessment level. Okay. Now, my brother Biswajit's question comes, time of supply. We have to discuss about time of supply. Michael, Yes. I would like to add about these accounts. There Yes, is also a provision of maintenance of utilization of the material from that particular project. Utilization nobody can do, project wise nobody can do, so every dealer has to suffer. Yes, it is why I telling. ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାଇଲ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଏ ୱାର୍କ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ପଡିବାଟା ସିଓର ସାର୍, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବା ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦରକାର, ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ। କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ, ସାର୍ ସବୁ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଫିସ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ वी डू? वी हैव टू सी। Next, Biswajit. Hello. Time of supply. Yes. Time of supply. ଭାଇନା କୁହନ୍ତୁ। ଏଥର ଆମେ ଆସିବା time of supply ଉପରେ। yes boss। କିନ୍ତୁ time of supply କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମଜା ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସାଫର ହଉଛନ୍ତି। କଣ ହଉଛି? ବହୁତ ମଜା ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା। GST started from 1st July 2017. Some contractors has made agreements prior to 1st July 2017, and they have performed some work there, but they have received some bills in GST regime. Received amounts in GST regime. Now the department is issuing notice and already made some assessments under section 74 and ASM 15 also. So my is under section 64 also. So my question is, it is a very complicated thing. Let us consider mu VAT regime रे किछि काम करछि, भाबी नियो तो जून रे किछि काम करछि, जून 2017 कंप्लीट कर देली, जुलाई 17 रे मु पाइली अमाउंट, whether I will liable for the VAT or GST. Tell me in chat box, please. Should be VAT. Yes. Should be VAT, as it is completed in VAT regime. Yes. VAT should be paid. In this regard, in this point of connection, there are several decisions, court decisions also there. But West Bengal GST department has made a clarification on 16th. Please note down. It is very important for you because so many appeals are pending in this area. Please note down. West Bengal GST department has given a clarification on 16th August 2017. On 16th August 2017. What he says, the clarification says, I am telling, work contract executed and completed, work contract executed and completed before 1st July 2017 and payment made on or after 1st July 2017.
what will payable? VAT will payable, or you are said VAT will payable. It is okay. Then next question. Works contract executed and completed before 1st July 2017. Invoice raised after 1st July 2017. Work completed before July 17 and invoice raised after 2017. Whether VAT will be payable or GST will be payable. Tell me in your just words. No, 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 no. No, 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 VAT no. paid करियो No. ये VAT paid करियो VAT paid करियो काहे की करियो? Work is completed. Work is completed before VAT and invoice. What the law says? Law says if invoice is raised within 30 days. If invoice is raised within 30 days of completion of service, please note down. Time of supply is date of invoice or date of payment, which is earlier. Date of invoice or date of payment, whichever is earlier. So आपण 30 days भितर जदि आपनकर सप्लाई ऑफ सर्विस अछि आपण 30 दिन भितर बिल राइज करि परिबे आपण जुलाई पूर्वरु कंप्लीट करथिले मध्ये जुलाई रे जदि आपण बिल राइज करचंदी विद इन 30 days ताहाले आपण VAT ही पेमेंट करिवे जीएसटी करिवे नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर बिल इज राइज्ड आफ्टर 30 days, व्हाट विल हैपन? जीएसटी will be levied. No, it West Bengal GST Council clarify karchi, or VAT will be payable, not GST will be. It is very important because so many appeals are pending now on this point. VAT is payable. सर मु एठो किछ कथा कहबाक चाहूची हमरो ओडिसा हाई कोर्ट जेतल VAT रो लोक आसिले जीएसटी को already work in progress or work is completed or work is amount is pending towards the government for receiving of amount. तीनटा जिंस लोकंकर थिला वर्क इज गोइंग चलथिला कार कंप्लीट हेइथिला कि पेमेंट पाइ नथिला कि बिल दिन ए तीनटा जिंस थिला जेतरो पेमेंट सब सरकार जेतरो देले ना सेमानकर भाट कटले ना जीएसटी पाइ देले से माने विदाउट एनी पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन द गवर्नमेंट हैज पेड टू फुल अमाउंट डीलर को दे देला एक जीएसटी रेजिम जो मान को पैसा जो मान को मिलिला से पीरियड भितरे सरकार कहले जे तुम मान को जीएसटी दियो ओके सेथिरे जो कॉन्ट्रैक्टर माने हाई कोर्ट जाई हाई कोर्ट हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू द वर्क्स डिपार्टमेंट तुम रीवैल्यूएशन करो एंड रीकैलकुलेशन करो जीएसटी पार्ट केते होची वर्क पार्ट केते होची देन दे शुड रीएस्टिमेटेड करो उन कोची किंतु नोबडी हैज नो डिपार्टमेंट किए किछि करि नानी सेम रखछन किंतु फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन आसी जी तांकर रिवैल्यूएशन अनुसार तुमरो जीएसटी से बांधिबो किंतु एमाने पूरा अमाउंट भाट पीरियड रे वर्क ऑर्डर जहां पाइथिले से वर्क ऑर्डर की पेमेंट अगेंस्ट से माने 12% टैक्स मागुछन देले किंतु हमर ओडिसा हाई कोर्ट हैव ए जजमेंट yes it is, you are telling about the ongoing projects. You are telling about the ongoing completed part we also आपण जेमति कहले completed part जून मास रे कंप्लीट हेची जुलाई मास रे पेमेंट पाइची जुलाई मास रे से माने वाइन सिनार तांकर जो पोर्टल रे दुसुची ए लोक जुलाई रे 3 टका पाइची बट आमे सेटा को देखैनु जेहेतु भाट पीरियड रे भाट रिटर्न रे देखैछु से माने को नाही सेटा तुम जे जुलाई मास रे पेमेंट आमे जत रिवाइज करिछु भाट रिटर्न को सेतर से माने डिमांडिंग अस जे नाही तुमे सेठी नाही एठी जीएसटी रे दबो a type of conflict chalchi department and the dealers. Yes, it is a complicated issue. It will be decided by the Supreme Court after stressing to apex court also. But one thing is there, according to my opinion, if work is completed before 1st July, VAT is payable. If his work is not completed and it is an ongoing project,
then will be as per that court decision, it will bifurcate. What part is goes to the VAT regime, what part goes to the GST regime. Okay. Nagao, Yes, let me yes. clarify something. Yes, yes. Actually, I am unable to recall. There is a commissioner circular for the department where it has been said that if the work has been completed before 1st July, then it will be coming under VAT. There will be no GST, even if the payment is received after the 30th June. Yes. And they have also made DRC 07/74. And I have also completed 2-3 cases where I have shown the RA bills, running account bills, where work has been completed up to 30th June 2017. And in those cases, they have also accepted that. And accordingly, actually, they received data from WAMIS. And according to up to age for WAMIS data, I supplied the running account bills. That it is coming under VAT and this is coming under GST. And accordingly, they have assessed. This is going on. Okay. Hello, say hi. Tell me. Any question? One thing. Hello. हाँ से हाईकोर्ट डिसीजन देखबो हाईकोर्ट रो डिसीजन संगे हमर कोनोसी संपर्क नै इट इज रिलेटेड टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स and that is between the works contractor and the department. It has nothing to do with the GST. नहीं एटा को डिसीजन रेडी कोना सेटा फाइनेंस सुनो दो भाईना सेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही इंस्ट्रक्शन अछि हमकु सेतिर किछ नाही रिवैल्यूएशन करो बोली वर्क रो हमो किछि संपर्क नै सेटा हमर कोई संपर्क नै रिवैल्यूएशन करो बोली फाइनेंस डिपार्टमेंट को से चिट्ठी करछन अच्छा ठीक है फंक्शन डिपार्टमेंट को लेटर है छिया यस मैं नोटिफिकेशन नंबर ता एटलीस्ट कहू ना नहीं डिसीजन द हाई कोर्ट रो डिसीजन दागा जे हाई कोर्ट रो डिसीजन हाई जो माने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर अछंती से माने हाई कोर्ट रे तक रीड गुटे फाइल करछंती रीड फाइल करिबी से माने गुटे माने हाई कोर्ट ऑर्डर धरि आछन नहीं गोटे मिनिट भाईना जीवन भाईना जहां मैं भाबुची पचारचंती जे जोटा कमिश्नर देइचंती जे जुलाई पूर्व जो वर्क कंप्लीट हेची दैट विल बी ट्रीटेड अंडर VAT सेटा कहउचंती सेटा मोर मने पडुनी बट देखि मु जदी हबो बोले देबी ओके जीवन जस्ट अ मिनट नाइक सॉरी टू इंटरप्ट यू आर वेलकम सर ये जीवन बाबू आपण जदि रिट पिटिशन नंबर देखार लेखंदो 20114 by 2018 ठीक है रिट पिटिशन डायरेक्शन टू गिवन टू फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट गोटे गाइडलाइन बनैछि कि किमिति डिफरेंशियल ऑफ टैक्स टा पेमेंट हो बट एज सेड by Biswajit no finance department no works department is acting on those things individual आपण वर्क कॉन्ट्रैक्ट रे केस करके से डायरेक्शन आनिया पड़ुची अगेन दे आर सेंडिंग बैक टू द एसिंग ऑफिसर आ कहउतनी प्रॉपर प्रोसीजर रे आसंदो एबे जेतरा केस हेची वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन द हाई कोर्ट एबे जो अछंदी हमर मिस्टर जस्टिस से क्लियर कट कहि दउचंदी यू अवेल द प्रॉपर फॉर्म सो इंडिविजुअल केस फाइल होची एंड अगेन दे आर कमिंग बैक टू दिस एसिंग अथॉरिटी दे विल बी फाइलिंग अपील अथॉरिटी हला पर जाएगी यू विल गेट रिलीफ ओके थैंक यू Thank you, Mr. Naik. Thank you, bhai. Next, we have to think about point रखले ए मु कहबी गोटे क्वेश्चन कोन हला सर नहीं मु से ये ऊपर कहबी आछे सर से पॉइंट को वर्तमान हमर विश्वजीत घर पॉइंट ता देखिया अच्छा विश्वजीत कौन क्वेश्चन करथिले हमको विश्वजीत प्लीज रिपीट इट द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव राइज्ड मोर फर्स्ट क्वेश्चन होचे जे मु मार्च मास रे आई हैव रिसीव माने इशू सर्विस बिल सप्लाई बिल टू द डिपार्टमेंट आल्सो
issued me a running account bill RA bill जोडा दोजन से मते 31 मार्च 2021 रे हेबे इश्यू करि दैछन्ती जे 30 टंका तुमे पाइबो बट मोर पेमेंट एप्रिल मास रे जेहेतु मार्च मास पेमेंट ता चेक कर देले मते एप्रिल मास रे माने आपण ग्राउंड रियलिटी दे जानतु हेले मु कोन करली जे मोडा जेतरा मो टीडीएस जेतरा एप्रिल मार्च रिटर्न जेतरा एप्रिल देखली ना टीडीएस किछि बुक हे TDS returns से GST TDS return they have no deductions the amount नहीं कि TDS amount भी नहीं कौन है ना हमें करिनु सेटा को आ आपण एप्रिल मास रे हमें देखबो आपण एप्रिल मास रे देखन तापर मु देखली जेहेतु मोर से मास रो वर्ष शेष रो अकाउंट ता 31 मार्च रे मु ताको देखेबिनी ताले मोर अकाउंट भी भूल हिजो मो से वर्ष रे मटेरियल परचेज अछि से मास रे पेमेंट भी पाइछि आरए बिल भी साइन हिछि आरए बिल भी मो पाकरे अछि इवन सप्लाई बिल भी मु देछि देला परे मु देखुछि मोर अकाउंट से जेतरा मेंटेन होछि मु अमाउंट रिसीव्ड देखुछि डेफिनेटली मु एतर मु बैलेंस शीट रे पेबल देखेबी कि कोन देखेबी कि सेटा मोर अलगा कथा किंतु एठी पडिछि मु एठी जति जीएसटी रे देखेबी आई विल पे एक्स्ट्रा 12% माने 1 crore 80 lakhs रो 12% इज 9,60,000 80 lakhs अगेंस्ट जदि मो 12% जदि बुक करबी जे टैक्स एतिकी जदि नो बुक करबी देन डिफरेंस इज देयर इन माय इनकम टैक्स ऑडिट जेतर मोर इनकम टैक्स ऑडिट होबो सेतर डिफरेंस क्रिएट करबो से माने 26 एस रे बुक करबे ऑलरेडी भी एबे 26 एस रे आसी गलानी से 26 एस रो केबर आसी रखि दियो वर्क इन प्रोग्रेस करी रखि दियो 26 एस रे मोर आसी गलानी जे तुमरो से 80 लाख ग्रॉस अमाउंट जा देखा कथा 26 एस को आसी गलानी बट 26 एस को बस मार्च रे आसी ना अप्रैल रे आसी मार्च रे आसी अप्रैल कथा नहीं फाइनेंशियल 20 21 रे आसी सो मो कथा टे सुनंतु तापर जेतर मो अप्रैल मास जेतर जीएसटी रिटर्न टा करूची करला ऑलरेडी मो आईटीसी मार्च मास जा देखा कथा देखै सरची जहा यूटिलाइजेशन भी से जो वर्क रिलेटेड रे हे सरची एबे मोर आईटीसी किछ अछि मध्य किंतु मु जदि से वर्क टा को मु नेबी एबे 20 21 सरला पर 21 22 फाइनेंशियल रे जदि नेबी नै कि ताको मु पेमेंट किछ करे पड़ुची मध्य से माने टीडीएस बुक करछन अप्रैल मास रे अप्रैल रिटर्न रे से माने टीडीएस बुक करछन एमिति एटा गोटे कथा नै डिफरेंट डिपार्टमेंट कोन करछन जनवरी फेब्रुअरी मास रे हमें पेमेंट पाइथबो हम अकाउंट रे क्रेडिट हेतिबो टीडीएस भी से माने बुक कर दोछन इनकम टैक्स टीडीएस टा को किंतु जीएसटी टीडीएस टा 2 मास परे मासे परे तांको इच्छा अनुसार जीएसटी टीडीएस रिटर्न फाइल करछन से जो डिफरेंस आसीबो प्रत्येक 3 मास थारे जो आसुची एबे डिफरेंट नोटिसेस आसी गलानी तमे जनवरी फेब्रुअरी मार्च रो एति टंका पेमेंट बट तुमे पाइछ एति टंका देखैछ एति टंका आउ डिफरेंस टैक्स दिउनु अरे सर हमें ऑलरेडी देई सरचु जनवरी रो पैसा डिसेंबर रे देई सरचु तमे जनवरी सेटा बुक करथि जनवरी केम देखैबु सेटा जो सेमानकर जो टीडीएस रिटर्न माने टाइमली नॉट फाइल्ड द डीलर विल सफर so many glitches are there ए कोन करा जबो टीडीएस कोन है देखंतो एपटे मारले गोहत्या सेपटे मारले ब्रह्महत्या आपण जदी मार्च मास रे देखेबे आपण जीएसटी रे प्रॉब्लम रे पडिबे जेहेतु कि जीएसटी टीडीएस ता आपण कर अप्रैल रे आछि आगे जदी आपण अप्रैल रे देखेबे तार इनकम टैक्स रे बैलेंस शीट ता आपण कर पीएल दा भूल होई हां नाइ दो सुन हां हमरो टाइम ऑफ सप्लाई रे work completed in March. Yes. Invoice issued in March. Invoice said that. 1 minute. Payment is received in April. So, as far as income tax is concerned, the work department becomes a debtor. Okay. Now the second question is they have not deducted TDS. It is immaterial. Up to October 2018, there was no TDS on works contract. So how it changed? That amount will also be a debtor for accounts purpose. January के sorry January के मु कुछ recent financial year 2021 रो मैटर कहूची मु yes 18 मैटर रो मु को जाउनी नहीं से कोन 18 पूर्व नथिला नहीं मैटर को जाउनी 18 मैटर जे टीडीएस आसी नथला नहीं वन कंपैरिजन करछि जदी हमें टाइम ऑफ सप्लाई नबा जो दिन तमे इनवॉइस इशू करलो और पेमेंट पाइलो व्हिच एवर इज अर्लियर अछि so you have to show it in GST as well as in
income tax. Income tax also. You have not received, so the department has become a debtor for you, nothing else. The TDS they have not deducted, but they have deducted in the month of April. So that part is also a deductor for you, debtor for you. So you have to show it in the income tax as well as in GST. Whether they have deducted TDS or not, it is immaterial. Better to show as per invoice. Yes, as per invoice. ज्ञान भाई मो कथा टिके सुनंदो आपनकर 26S रे आपनकर जेतलो इनकम टैक्स मो प्रिपेयर करबी से 80 लाख देखा जाउची एबे यस जीएसटी रे एबे अप्रैल मास रे देखा जाउची से जीएसटी टीडीएस रे आपन कहले और 30 डेज आई विल मो से ताकू नै जाउची अप्रैल मास रे किंतु जेतलो डिफर टैक्स क्रिएट करबो आउ थर से मानकर कोन डिपार्टमेंट रो जो 20 ये अछि फाइनेंस डिपार्टमेंट रो जो साइट ता अछि सो वाइमसी ना कोन अछि सेतिर से मानकर फाइंडिंग्स आउ थर देखुचंदी कोन कहिछि कोन नै ठीक अछि जे नै ठीक अछि जीएसटी नहीं जीएसटी जेमिति हमको हैरान करछि विश्वजीत जीएसटी जेमिति हमको हैरान करछि डिपार्टमेंट में हमको वर्ष डिपार्टमेंट में हैरान करछि वी हैव टू रिकंसाइल वेदर इट इज अंडर इनकम टैक्स और अंडर जीएसटी सुनंदो भाई ना रिकंसाइल मैटर इज आमे बुझिबा आपण बुझिबे किंतु जेति इंस्पेक्टर बसिचन जीएसटी रे बुझचंदी रिकंसाइलेशन मैटर भी बुझि पाउन कोन हेछि एटा त पाइछो तमे पेमेंट आ तमे कोन रिकंसाइल करछो नाही सर एटा एमनी हेछि सेम दिछि एटा किन दबो तम तो दबाक पड़िबो दैट इज अ मैटर जो नहीं बुझिया दरकार नहीं वी विल गो फॉर अपील सिटिंग फॉर दैट अथॉरिटी अछि से अथॉरिटी केते अंडरस्टैंडेबल दैट इज द पॉइंट से होछि कथा एठी मु पकेली बैलेंस शीट की कोन करली दैट इज अ डिफरेंट इशू अदर पार्टी जो अथॉरिटी अछि से अथॉरिटी केते बुझिवार शक्ति अछि आ तार केते ज्ञान अछि सेटा होछि इंपोर्टेंट विश्वजीत सर बहुत गुडे कॉम्प्लिकेटेड केस अछि बाबू देखो तो ज्ञान बाबू जो है कहले विषय भी होछि आपण जति आइरे दीडा खाता मेंटेन ना पड़ियो सुनो सुनो ठीक है जदी आमे मार्च पूर्व आमे से रिसिप्ट देखे दबा बा मार्च पूर्व हमर इनकम टैक्स रे नै जिबा एवं जीएसटी रे नबा आपण को 61 नोटिस से माने करिवे से माने वाईएमएस डाटा कलेक्शन करके आंसर पचारिवे आंसर पचारला परे आपण को से माने असेसमेंट करि पारंती असेसमेंट डिबेट करंती डिबेट कले आपण अपील को जिवे सेतिर भाबियार किछ नै किंतु आपण जो कहले जे डिपार्टमेंट रे जो इन्स्पेक्टर माने अछंती से मान तो अनभाग्य आमे कोन करि परिबा से माने तो से माने बसै छन आमे केवल क्लैरिफिकेशन देई परिबा आ किछ करि परिबा whether we will for the next chapter yes okay next we will discuss about अच्छा आउ गोटे जिनस विश्वजीत ज्ञान मु गोटे क्वेश्चन पचारिबी जे वाईएमएस डाटा what they have collected from the YMS the department is calling so many questions are coming to me जे YMS डाटा जहा कलेक्शन से माने करूचंती तकर डाटा YMS रो कलेक्शन करियर अथॉरिटी अछि की काहे की देखंतु मु देखिली केतोटी क्लाइंट रो YMS डाटा रे तांकर फिक्स्ड डिपॉजिट भी देखै दोछि व्हाट अमाउंट माने को अमाउंट आसी छि को अमाउंट न आसी सेटा क्लैरिफाई ना केवल अमाउंट एतिक रिसीव करछि अरे अमाउंट तो क्लैरिफाई होबा दरकार वर्क कॉन्ट्रैक्ट रो पेमेंट विशेष रे केति आसी फिक्स्ड डिपॉजिट रो केति रिफंड आसी रॉयल्टी रो केति आसी ए सब जिंस डाटा नै सो व्हाई वी हैव टू आई थिंक माने हमें डिपार्टमेंट को काहे हम गोटे लिखि परिबानी जे वाईएमएस डाटा इज वेरी कॉम्प्लिकेशन एंड से डाटा भी क्लियर ना ताकू बेस करके आपण असेसमेंट करछुंती हम अपील को जाउछु अजथा लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी at best we can write a letter to the assessing officer when he issues a notice that if you have received YMS data then please specify under what heads we have received the payment. Yes there is no clarification is there yes. Only the amount is there the what amount they have received they should say so it is the it is ha कॉलेज भाई कोन एक्चुअली कोन की नेचर ऑफ रिसिप्ट से मान देखुनांदी इवन सिक्योर डिपॉजिट अपन पाइथिले मध्ये रेमिस डाटा अनुसार अपन नोटिस पठे दोछे गुटे प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम ला अपन अप्रैल रे काम करछंती अप्रैल रिटर्न दैछंती टैक्स दैछंती मात्र डिपार्टमेंट कोन करछि जून रे से टैक्स बांधुछि सेथिरे कोन होछि अपन को डिफर करछि से तोलो जून रे तमे नील रिटर्न दैछ तमर मैच नेली आसुछि
आमे जेता कंप्लाई करछंदी ऑफिस कोन कहूची हमर सेल टैक्स कोन कहूची तमे ता डिपार्टमेंट लेखि आनो जे मु जून रे फाइन तमे जाईकरे हमें सेटा को अता करू ए टाइप होची नेचर ऑफ पेमेंट से मैं देखु नांती यस यस फॉर टैक्सेबल होबनी हेले मन देखु नांती मात्र नोटिस करछंदी तापरे ऑर्डर कर दोछंदी देखो कॉलेज भाई मु गोटे कथा कहूची आपण डिपार्टमेंट केवल नेचर ऑफ पेमेंट जदी देखि थांता हां एते सब प्रोसीजर के आ दरकार पड़तानी हां बहुत प्रॉब्लम करछंदी देखो तो ताके शोकेस दबा दरकार पड़तानी लक्ष लक्ष ना डिमांड करछु असेसमेंट दरकार पड़तानी कि हमें अपील को जीवा दरकार पड़तानी सो इट इज लॉस ऑफ टाइम एंड लॉस ऑफ एनर्जी आ किछि नै फॉर सेक ऑफ सिंगल पॉइंट so hello brothers hello नहीं बाबू hello हां hello जानो एप्रिल रे पेमेंट पाइला हेलो एप्रिल पेमेंट पाइला रिटर्न देखेला से जदी जुलाई रे पाइले डिपार्टमेंट जुलाई रिटर्न फाइल कला एले मिसमैच हला एले डिपार्टमेंट देखिया कथा ना अप्रैल और जुलाई भीतर सेम अमाउंट अछि ना सेम टर्नओवर अछि डिपार्टमेंट देखुनी नोटिस कर दो से माने जदी 5 मिनिट समय नष्ट करि परथांते हमर 5 दिन रो परिश्रम रही थांता इवन मध्ये आपण मेल आईडी चेक कर नथि बेले ऑर्डर पळे आसुची आपण मेल बेले ताके एक्सेप्ट कर नांती यस यस वी विल टेक नांती आमे जानुअल कहजे मोने पछले एले आपण बडा काई रिसीव कले नै सेटा अला कथा जति मैनुअल जन देई देछि बडा रिसीव करिया कथा नै तमे ऑनलाइन रे कराइल कया कथा सेटा माने देखु नांती मन सर आपण कया कथा ना ना टाइम नाही कया ए टाइप गोडा खाली खाली होछि नै मो एठी गोटे किछि कथा कहबा चाहूची हां गणेश भाई ना हमर जो कथा कहले जे विथआउट टाइम सिक्योरिटी मनी मु भी सेम कहबे विथआउट अमाउंट रो किछि किछि डिपार्टमेंट गोटे कॉन्ट्रैक्टर रो किछि विथआउट अमाउंट टोटल अमाउंट ऊपर टैक्स काटी दिथन विथआउट अमाउंट ता पुणी सरकार जेतला हमको दोउचोंदी पुणी जेतला डिपार्टमेंट सेतरे जीएसटी काटी न थाउचोंदी किंतु ताकर वाईएमसी डाटा रे विथआउट अमाउंट मध्ये ताको अपलोड कर दोचोंदी सब मासर पैसा हम एथि देइछु अरे बाबू से पैसाटा विथआउट अमाउंट एथि टंका अछि आ जीएसटी अमाउंट रे प्रीवियस विथआउट अमाउंट कि एरियर बिल अमाउंट ता थिला मोर से पैसा आसी सेटा भी से दे डोंट वांट टू माने लिसन एनीथिंग जे जति कि दूसरो से तो तुम टैक्स दे दियो मान कोन को जे विश्वजी समान को जे ना ऑफिस लेखिया ना मु सिक्योरिटी डिपार्ट बाबत रे सर रनी एठी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई ऑफ बिल्स परफेक्टली दोनी फर्स्ट कथा द्वितीय कथा जो माने भी दोउचोंदी से अनुसार आरए बिल भी होनी आरए बिल आपन को जेमिति होची आपन को बुझिबा पई 15-20 मिनिट दरकार पड़जी के ग्रॉस अमाउंट केते 12% जीएसटी केते देन टोटल केते तर टीडीएस केते जति 1% टीडीएस को जति 100% कैलकुलेशन करबे से एठी भी टोटल अमाउंट आपन मैचिंग भी होनी से जो रनिंग बिल आ हमर बिल ऑफ सप्लाई बरमपुर रे कोनोसी कॉन्ट्रैक्टर बिल ऑफ सप्लाई दो नांती फर्स्ट कथा मोर गोटे कॉन्ट्रैक्टर अछि आउटसाइड द गंजाम डिस्ट्रिक्ट दे हैव इश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव रिसीव्ड द सप्लाई बिल कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई बिल देले देख तांके आरए बिल दोजन एठी ना सप्लाई बिल अछि ना आरए बिल को सप्लाई बिल मैचिंग अछि ए पेमेंट कोन ना सर पेमेंट देला हमें रखि दु ए डिफरेंस रे हमें घंटी हे कि दिन जाउची छाडे डिपार्टमेंट हम छुट्टी दोची जे तुमरो एते लाख टका डिमांड अछि दियो अरे बाबू नाइ एति की कटि के आसी एति देलु ना ना हम तो वाईएमसी डाटा रे से माने कोन अपलोड करचोंदी केमिति अपलोड होची सेटा भी हमें बुझि पान वर्क्स डिपार्टमेंट रे जो क्लरिकल बसचोंदी से कोन टीडीएस रिटर्न गोटे प्रकार वाईएमसी डाटा गोटे प्रकार रनिंग अच्छा हम वाईएमसी डाटा हम चाहेले देखि परियोनी ना हम देखि परियोनी तमे देखि परियोनी अच्छा ओनली डिपार्टमेंट आ देखि परियो वाईएमसी डाटा ओनली डिपार्टमेंट अच्छा भाई विश्वजीत भाई हम एटा पई केतळ ऑफिसर को डाकी ओडे मीटिंग कले से क्लेरिफाई कर देई ना या परे कमिश्नर को टिके लेखिले कोन होंता नहीं है ना सब लेखिले किछि होबनी डाकी के बर्तन पचारी क्लियरिटी करिया तापरे बर्तन प्रोसीड करंदु ना ए प्रॉब्लम जाको सब जूम मीटिंग रे ऑफिसर को डाकी बसेबा यस बसे कले ही आबो हां न बसेला न तम ऊपर दासन ट्रांसफर करिया पे चेष्टा करिया हां संपूर्ण हां समान कोन करजे वामेश डाटा ऑन जाय या नोटिस कर दोचोंदे आ किछि देखु ना नाइ गो ए वामे नाइ गो ए वामेश डाटा ऊपर कमिश्नर को लेखिले भलो होता ना
हां लिखिवा गोटे चिट्ठी करिया मु तो से कथा कहूची वाइमेस डाटा से माने मु कहूची बेरा से माने 5 मिनिट समय नष्ट करनाती आवर 500 दिन समय नष्ट करचोंती एडा कमिश्नर को लिखिया कथा नायक भाई ना मु आ गोटे छोटे कथा कहबे आपनकर वीडियो माने एबे जो डिपार्टमेंट को जो कहउछन तमे जो जो छोट छोट एमजी एनआरजीएस रे पेमेंट जो दउचंदी से माने कोन करछन एमान अकाउंट को छाडी दउचन पैसा वीडियो कहउछ तू गोटे जीएसटी करे से जीएसटी कले ताकू ना टीडीएस अछि ना कोन अछि ताकू को एमजी एनआरजीएस को नाही जीएसटी किंतु से माने वीडियो कहउछ तू गोटे जीएसटी नंबर देले तते हमें पैसा दे दू तू कोन करछु दे तापरे से जीएसटी नबो किंतु पेमेंट ता कहउछ तू सीमेंट डीलर रो बिल दे से सीमेंट डीलर बिल दउछि रॉड रो बिल दउछि कि तार निज बिल नहीं से आ गोटे लोकर बिल दउछि किंतु आनार पेमेंट ता दउछन जीएसटी रे देखले ये 12% दबा पई राज्य होनी जी कॉन्ट्रैक्ट अरे एमजी एनआरजीएस रे तो तुमरा एग्जाम्पशन अछि व्हाई यू डू इट तुम का वीडियो ताको काई प्रेशर पकोछि ए माने ता फाइनेंस डिपार्टमेंट वीडियो को किछु कोनी वीडियो तार सेव करे पई चैट को से चलै छन धंदा नहीं देखो इलीगल थिंग्स आर देयर एटा केमती होची कोन होची तो हमें कहि परियनी से माने डिपार्टमेंट देखो तो प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर मोर छोटिया कथा प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर गोटे गोटे पिल्ली पॉलिटिशियन एम आई करेक्ट ना छोट छोट पॉलिटिशियन से माने प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर से माने का को कोन करी कि केमती पैसाटा आसीयो सेटा देखथुंदी एबे एटा गोटे कोन होची प्रॉब्लम होची डिपार्टमेंट रो किछि जो काम रो बाहर होची सेटा से माने जेई को द्वारा काम करोछन मो पाकर गोटे कॉन्ट्रैक्ट आसला जेई को द्वारा काम होची जेई नारे गोटे करंट अकाउंट खोला होची जेई से करंट अकाउंट पेमेंट करची ताकर जो काम हेतो ता फेर पेमेंट होची हेलो हां हां कोंतो जेई सपोज वीडियो गोटे ब्लॉक रे काम करियो ब्लॉक को वीडियो को ट्रांसफर के तार अकाउंट ता वेरीफाई क्लोज हो तार अकाउंट आउ वीडियो कोन करियो से काम अगेंस्ट रे कॉन्ट्रैक्टर को बिल कलेक्ट करियो एति हला तांगर काम ता ऊपर कोनोसी टीडीएस कोनोसी आपन जीएसटी डिडक्शन नाही पूर्ण सुनो मु कहूची सेही तार करंट अकाउंट निज नारे ओपन करके केबे भी करि परिबो नाही हां सेटा गोटे इलीगल समान करछन देखो तो ए जो जिनिसटा चलची कॉन्ट्रैक्टिंग केस रे गवर्नमेंट विशेष करी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन केस रे कोनोसी प्रोसीजर अनुसार चलेनी कोनोसी ठीक रे चलेनी so that is their matter we don't want to discuss about this but one thing is there the YMS data पय जो हमर क्लाइंट माने हैरान होचंती ता ऊपर हम किछि स्टेप नबा जीवन भाई ना कहला गोटे कमिश्नर को लिखिवा चिट्ठी लिखिवा हमर एडिशनल कमिश्नर को मध्ये कॉपी दवा आबे ए विषय टिके डिस्कशन करिया मु हमर प्रेसिडेंट रंजित पाडी को मध्ये रिक्वेस्ट करिवे ए विषय रे से आपको ऊपर स्टेप ने लाइक सर एडा दिलीप दास सर को लिखि दियो ये से हमें कमिश्नर को लिखिवा दिलीप दास कमिश्नर लिखिवा दिलीप दास को देले कोन फॉरवर्ड देबो दिलीप दास को देले किछ होबनी दिलीप दास को दे एबे आ गोटे मजा कथा सुनंतु माने प्रैक्टिकल जिंस कहूची हार्ट पीरियड रे कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट करथिले सब कॉन्ट्रैक्टर टू टंका नेगरी तावाडी से पळे गला 3 वर्ष पर ए माने जीएसटी दाबी करछथि कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर एबे ए जो छोट कॉन्ट्रैक्टर बड़ कॉन्ट्रैक्टर रे गंडगोल बहुत आरंभ होला प्रत्येक केस रे बहुत गुडे कॉम्प्लिकेशन अछि सेउडा सेमानकर मैटर वी हैव should not go for this but a very important point is YMS data ऊपर हमें डेफिनेटली कमिश्नर को लिखिवा लिखि के और क्लैरिफिकेशन न और किछि यदि समाधान हेई परिवो ताले बहुत भलो होता so my friends we have to discuss about the next point rate of tax सब कॉन्ट्रैक्टर कथा उठलानी प्रथम रेट ऑफ टैक्स देखिया पूर्व आम गोटे जिन टैक्स बोधे शेड्यूल 2 पारा 6 रे जहाँ मेंशन अच्छी जति contractor works for the government entity it is 12%. If it is non-government entity it is 18%. Am I correct? So it gote question raise करछि subcontractor case रे I am a
government contractor, main contractor. I have engaged a subcontractor. सुनो तो এটা बहुत practical point. ମୁଁ ଜଣେ government contractor, main contractor. I have engaged a subcontractor for part of my work. My subcontractor is issuing 18% bill to me, and I am issuing 12%, charging 12% GST to government. So is it correct? Tell me. What is the rate of tax, exactly rate of tax for the subcontractor? Please, I am looking for the chat box. Please answer this. I think 18%. 12%, sir. 12%. Another? I think 18%. No, sir. 12%, sir. 12%. Two decisions are there. One is, please note this. This is very vital point for the subcontractor. It dita decision भी अच्छी. गोटे note करंतु. AAR from Uttarakhand High Court dated 30th June 2019. Another decision is there. AR Maharashtra dated 11th July 2018. These two decisions said for subcontractor is working for the contractor. But what is the work? The work is for the government. So what the contractor, main contractor is charging, same rate of tax will be charged to the subcontractor. Here he clearly says that data advance ruling declare for gotiye jinso clear hochi. It is possible to for the work contract he will charge 12% if contractor is charging 12% to the government. Okay. By another question. Private contract ହେଇଥିଲେ କଣ ହବ? Private ହେଇଥିଲେ କଣ ହବ ତାକୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ Private contract ହେଇଥିଲେ. ଦାସବାବୁ main ସେ 12% 18% କୋଉନି जो contractor ଯେତିକି ଚାର୍ଜ କରୁଥିବ subcontractor ସେଇ amount ଚାର୍ଜ କରିବ. ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ private contract case ରେ it is 18%. Yes, private contract case ରେ 18%. You are correct 100%. I go. What is କହିବି? Yes. ମୁଁ କହିବା କଥା it is actually this is 18%. But because the main contractor is working for the government, it may be considered as 12%, and it should be considered as 12%. But the AAR, it is not valid, and if the subcontractor is at the later stage charged 18% by the department, the main contractor will not pay the tax to the subcontractor. So these are the risks. So AAR definition authority ruling is only applicable to the particular person. We can cite, but there is no decision from any high court. So it is better to charge 18%. Why? Because if we charge 12% and at a later stage department asks for another 6% and tax interest and penalty, then the contractor will not give. Will be imposed. Yes, you are. But somehow it is correct. Practical aspect. Practical aspect. But one thing is there. For the if you go to the natural justice, the work is for the government. Who performs? The subcontractor is working for the government work, and the main contractor is working for the government work. It is a dilemma. It is a disputed issue. It can, what you say, it is also correct because आमे जदि एबे contractor को 12% कहि दबा सेतबेले जदि 6% extra charge करियो से आम मुंड ऊपर कहि. That is also correct. We should in safe side. Okay. Next, another important question I am going to raise. Please tell me, आमे
the contractor construction work upare construction work upare kete prakar tax गोटे तो 18% गोटे 12% आउ किछि टैक्स अछि कि केते प्रकार टैक्स 5% भी अछि इरिगेशन केते 5% for irrigation work. Not exactly irrigation work. If the labor percent is more than 75%, then that is 5%, not irrigation work. For the predominated earth work. 6% also, sir. No, 6%. No. So 3. How? A composition delay. Composition delay is a separate issue, but I am telling about the rate of tax. I am telling about the rate of tax. Okay, composition delay 6%, but as a supplier of service. Exempted भी अच्छी. Exempted भी अच्छी. Yes, exempted भी अच्छी. So there are 4 types of taxation systems there. 18% for the non-government works. I am telling. 18% for the non-government works. 12% for the government work. 5% for the predominated earth work. And deal tax if work is done for the pure service work. 0% for the pure service work. So for the 18% and 12% there is no any complexity. I am telling about the predominated earth work. What is predominated earth work? If predominated earth work is 75% of the total work contract, then you can charge at 5% rate of tax. On a notification 39 2017, in 13th October 2017, it is notified that if the work contract work is predominated earth work involving 75% of earth work, then you can charge 5%. For the government entity only. Remember this point. For the government entity only, not for the private. If it is a private entity, then it will be charged at 18%. Remember this point. So now I request my friend Jivan Bhaina, please put your question. Thank you. Thank you, Michael. Hello, am I audible? Yes, very much. Sir, आपने देखा जाओ ना अभी. Hello. अब क्यों पूछते तुम? मोर गोटे क्वेश्चन अछि मु गोटे job contractor executing contract work under government only government, and my nature of work is exclusively borewell. There is no involvement of any material. Material is being supplied by the department. Only I am digging the tubewell and I am getting the amount from the department. And in this case, what will be the tax rate? Because it is also the works are nature of work are Jal Jeevan Mission, Gopabandhu Gramina Yojana, National Drinking Adarsha Gramina Yojana, sponsored program of TASP and Rural Infrastructure Development Fund, RIDFO, such type of works. This is only for providing water facility to the public. Public development. Pure drinking public welfare. 0%. So what will be the rate of tax? I think it is 0%, but the department is demanding 12%. I think it is 0%. I am telling frankly. Please give the suggestion. Yes. Composite supply of works contract involving predominantly earth work
that is constituting more than 75% of value of work contract provided to the central government, state government, union and territory, and so. The entity only attracts 5%, not 12% or 18%. This is okay. But your question is another type. You are telling that no work, no material is supplied there. No material is supplied. Material is not supplied by the contractor. Material are supplied by the department. Materials are supplied by the department. My nature of work is exclusively labor and for the benefit of the public. No, Jivan bhai, your client is not supplying any material. No, I am not. Okay. Please go through a AAR. Karnataka High Court has given an AR. In case of borewell, energized borewell, whether the here question rises whether the transaction of applicant relating to execution of work contract pertain to energized borewells, is it covered under Article 243G? At the Definitely. Constitution, their supply is made to the government entity. Am I clear? The supply is to the government entity. So this is exempted under notification. Please note down, under notification number 2 by 2018, dated 25th January 2018. 18. So no doubt it is a debatable issue. It is a debatable issue. देखो आमे वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जोड़ा भी डिस्कशन करूचे सब गुड़ा डिबेटेबल इश्यू ज्ञान जोड़ा कहले जे प्रत्येक पॉइंट डिबेटेबल इश्यू मु आपन को 0 कह दी आपण 0 सजेशन कर देबे पर आपन को 5% चार्ज कर दो बट एज पर माय ओपिनियन इट इज सेफ इफ यू पे 5% but how can you pay 5% if you are not supplied of goods? ଆପଣ କୌଣସି ଗୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ୱାର୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏଣ୍ଟିଟିରେ ବି ଆସିବନି ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ୟୁର ଲେବର ସର୍ଭିସ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଆମେ ପ୍ୟୁର ଲେବର ସର୍ଭିସ ଉପରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା what pure labor service says ନାଇକ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ କହିବା ଚାହୁଁଛି ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ yes କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଜଳ ମିଶନ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଇନ୍ ହଉଛି ମୋର ବି ସେମିତି ସେମ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଇଜ ଦେୟାର ଆଇ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ଆମକୁ सर्विस प्रोवाइड करूची जेहेतु सर्विस प्रोवाइड करूची डिगिंग पई से टैक्स दबा पई जरूरी काहे दे हैव डिस्कस्ड विथ सम अदर तांकर डिपार्टमेंट रा अदर पर्सन सहित कथार्ता ला परे नाही एटा से 12% हमें रनिंग बिल रे से माने 12% पको 5% के को इरिगेशन माने जल शक्ति मिशन कोन तांकर अछि जल मिशन से माने 5% करूचंदी आउ केते जण 12% କରୁଛନ୍ତି 12% पे बंद କରୁଛନ୍ତି 5% କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ सर्विस ଦଉଛି सर्विस ଉପରେ 5% ଦବ କେତେବେଳେ ସେମାନେ 12% ବି ରନିଂ ବିଲ୍ ଉପରେ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ କୋन କେମିତି ରନିଂ ବିଲ୍ ପାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି 1% TDS ବି କାଟୁଛନ୍ତି ଯଦି if exempted no need to deduct a tax TDS भी होச்சு 1% 2% ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ଫାଇଲ କରି ଅପିଲ ଯାଆନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା जीवन भाईनकर सर्विस सप्लाई सर्विसेस रे जीवो आई थिंक सो सुनतो विश्वजीत प्रोवाइड करजे ही कंज्यूम डीजल एंड अदर मशीनरी इक्विपमेंट इनपुट भी नौची से तापर मशीनरी तार जो बोर रिग रो जो मशीनरी तार परचेज करूची से इनपुट भी मोर क्लाइंट्स नौची काहे रिग मशीन चलीबो कि मशीनरी इज रिक्वायर्ड से इनपुट भी नौची मोर आईटीसी क्लेम कर परिबो ना नहीं एग्जेम्प्टेड हेले त आपण आईटीसी नै परिबेनी यस
गोटे जिनस देखंतु आपण गोटे पॉइंट रे जांतु एटा आर्टिकल 243 जी रे जाउछि ना नाही हां से पॉइंट फर्स्ट से पॉइंट आपण फर्स्ट देखंतु आर्टिकल 243 गोले एग्जाम्प्टेड हबस किंतु प्योर सर्विस वर्क तीनटा पॉइंट कोछि सर मन रखो इट मस्ट बी ए गवर्नमेंट एंटिटी नंबर 2 होछि आ प्योर सर्विस हेतिवा दरकार कोन से मटेरियल यूज होबा को हबनी नंबर 3 कोछि जे 243 जी रे सेटा आछछि ना देखियो ए तीनटा पॉइंट जदि आपण फुलफिल करले ताहाले आपण को जीरो रेटेड हबो ना नहीं एठे मोरो ना नहीं ना कहू एठे मोरो गाड़ीटा लागुची ना भाई ना आपण गाड़ीटा माने कंप्रेसर मशीन अछि खाली गाड़ी लाग ना नहीं गाड़ी रे मोरो गाड़ीटा लागुची माने मटेरियल अछि आ कोन जीवन भाई मोर टे कथा स्टिक डीजल टा आसियो डीजल इज एक नॉन जीएसटी गुड्स आपण सेटा छाडी दियंतु से जो मशीन एग्जाम्पल हबो आ कोन नहीं सुनु नांती मो कथा टिके जेहेतु रिग मशीन टा यूज होची रिग मशीन रे किनुची रिग मशीन रो स्पेयर भी किनुची रिग मशीन रो इनपुट नबो से तार मेंटेनेंस रो जहा तार बोर तळे जा ब्लैक डायमंड्स यूज होची रिग पैंकी ड्रिल पैंकी से सब मशीन रे इनपुट नोची नहीं सही मोर क्लाइंट नो नहीं मो क्लाइंट नो माने आपण एग्जेम्प्टेड नोचुंदी केम दिन नेबे नहीं गोटे मिनिट विषय गोटे is any material transport whether you use diesel or any granite cell for digging or machine whatever it is any material transport to be considered as works contract or service no material you are using the machine you are using the vehicle you are using the diesel you are using the rig machine but no material is transport no material is involved purely it comes under article 243 G of the Constitution of India. So I think better to prefer read in the High Court. No, that is ज्ञान भाई sorry ज्ञान भाई आपण जोडा कहले जो गोट मशीन टा चलीबो केमती मशीन केमती चलची चालू जिमी चलची चालू you can run it by hand or run it by diesel or run it by electricity सेते तार इनपुट नबो नहीं input kin nabo if the input no suno every input must have an output if your output is zero how can you take input जेहेतु डिपार्टमेंट मते जो बिल दोछि आपण से बिल टे देखंदु से बिल रे केते परसेंट टैक्स दोछुंदी नहीं डिपार्टमेंट कोन दोछि सेटा कथा पडनी कथा होछि व्हाट इज द माने एक्चुअल पोजीशन सेटा कथा पडछि डिपार्टमेंट भूलो करछि डिपार्टमेंट सुनो वर्क ऑर्डर लेखा होछि सर्विस डिगिंग ऑफ बोरवेल that is the service part that is the no work contractor जैसे सीमेंट लगोनी किछि तार माने नळकुर चारिपट सीमेंट वर्क भी नै से खाली खोली दबो पाइप ता सरकार देबे पुति दबो पळे आसो आउ किछि काम करबोनी no I will suggest go for an advance ruling मो भाबो no advance ruling रे भलो आसीबनी advance ruling करले ज्ञान भाई advance ruling करले सब बडे एडवर्स का पाइबो सपोर्टेड किछि पाइबे प्योरली सर्विस सेक्टर एटा हाई कोर्ट रे का प्योरली पाइबो हाई कोर्ट जदी जिवो रिट फिट करियो प्रॉपर एटा पाइबो आइना ओडे रीड फाइल करंतु हां ना एटा रीड जाई छि हां राइट थैंक यू हेलो हां गल एबे भाई ना मोर ओडे क्लाइंट अछि से म्युनिसिपैलिटी रो काम करछि सैनिटाइजेशन वर्क ताई से सैनिटाइजेशन वर्क से तो से मटेरियल भी सप्लाई करछि बट तार जेतु सैनिटाइज वर्क अछि इट कम्स अंडर 243 जी रे जाउछि इट इज फुली एग्जेम्प्टेड म्युनिसिपैलिटी किछ काटनी हां तो से टाइप रे आपण रहबो मटेरियल थिले मते मटेरियल जे आपण यूज को जा भी करले भी आपण तार इनपुट नै परिबे ना मटेरियल तो नाही हो नहीं एनीवे मटेरियल नहीं सपोज आपण कोन से प्रकार मटेरियल यूज सपोज करले माने सपोज डीजल करले की कोन सी मैकेनिक पाई के जति किछि मटेरियल यूज करले तबे भी आपण तार इनपुट नै परिबे नहीं एटा नब्बा को हला हां काई कि आपण रो एग्रीमेंट रे 234 जी ऊपर ही देई छी आपण एग्रीमेंट हां किंतु बोर रे आपण को जतल सर्विस टैक्स थिला से माने सर्विस टैक्स पेड करथुले सर्विस टैक्स इज अनदर मैटर ना जेतु से टाइप ऑफ नेचर ऑफ वर्क इज सर्विस प्रोवाइडर नेचर सर्विस नहीं
गवर्नमेंट अंडर रे काम कले सर्विस टैक्स देबा कथा नुनी जदि विश्वजीत state- टिका रिपोर्ट पाउतले समान जीवन भाई क्लेम टिका आगु टिके जिबा समय हलानी यस फाइन ओके 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 प्रोसीड आगु जिबा आमेन so one thing so there are 4 types of taxation rate is imposed to work contract, that is clear. So we have to see one interesting matter. Installation of solar power panel. Installation of solar power panel. The company is registered in Karnataka and worked at Maharashtra and supplied solar power panel to Maharashtra. So his solar power panel is complete 5% rateable goods. But Karnataka supplied the company supplied from Karnataka to Maharashtra, installed at Maharashtra. So Maharashtra Financial Department said it is a composite supply and it comes under works contract because it is installed and attached to earth. So they seek for the AR. Here, Dita High Court the prakar decision. Karnataka High Court said it is a supply of goods. It is leviable 5%. But Maharashtra High Court said in same topic, it is composite supply of and comes under work contracts, it is payable at 18%. So many AR there is very difficult and it cannot be judged how to involve each one. But one is there for that particular industry, solar power panel. The Government Finance Department of India in 31st GST Council meeting held on 22nd December 2018, they decided 70% of supply of goods will be treated as supply of goods at the rate of 5% and 30% as work contract at the rate of 18%. So it is mercury to law. देखो तो गोटे particular industry पे law change कर देले. For that particular industry 70% को 5% rate रे देबे और 30% 18% rate. The system is there. Air रो मध्य कुछ ठीक ठिकाना रोहन. मोर गोटे बिल्डर क्वेश्चन अछि अच्छा देइना को ऊपरे बिल्डर यूनिट ना बिल्डर टा हम रियल एस्टेट ऊपर अन्य दिन करबा गोटे दिन करिया हेडा पूरा आउट दिन करबा सेटा भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड ये इशूटा माने टिके लंबा टाइम लागियो आ मजा लागियो बहुत भल लागियो बढ़िया लागियो तापरे हम आसीबा ये टीडीएस विषय तो समस्त जानछथि हम सेटा को स्किप कर दबा टीडीएस को जिबानी गोटे क्वेश्चन कैन ए कंपोजिशन डीलर tax credit of tax deducted at source. गोटे composite dealer TDS नहीं परिबो ना नहीं credit नहीं परियो please wrote down in your chat box नहीं परियो okay आपरे हमें आसीबा next issue ITC कहला मतलब the nerve of the GST. ITC is the nerve of the GST. So it is so complicated and so debatable point about the ITC. Motaku besi samay nebini. Section 17(5) subsection C restricted some points taking ITC. Yes. It is the it is the soul of GST. Okay. I agree with you. It is the soul of GST. Gote question. Mu moro ghar kama pai. Kichi bill
कलेक्ट कली मटेरियल कलेक्ट कली बिल पाइली जो इनपुट टैक्स टा वो नहीं ची व्हाट इनपुट टैक्स आई हैव पेड से इनपुट टैक्स टा क्रेडिट वो नहीं परिवी ना नहीं कैन आई अवेल माय इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर माय ओन अकाउंट प्लीज टेल मी जय परिवे जदि आपन नंबर नंबर नो 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 आपण जदि आपनकर ओन अकाउंट पे नेबे लेट अस कंसीडर गोटे क्वेश्चन पीके नायक एग्जाम पीके नायक इज ए कॉन्ट्रैक्टर पीके नायक इज ए टैक्स कंसल्टेंट one he wanted to renovation of his work office building so if I pay something to the contractor bhai tike sound slow I am engaged as contractor to perform this work I am paid something so whether I can avail credit of ITC or not tell me no sir नहीं आपनकर जीएसटी नंबर अच्छी ना नहीं yes के जीएसटी नंबर नथले मु क्रेडिट कार्ड नेबी हां ताल नेबे नहीं पारी जीएसटी नंबर थले नहीं पारी सुनो तो because you are not the contractor एठी दुटा पॉइंट सुनो तो नहीं एटा आपनकर निजर सुनो तो दिस इज प्रोफेशन पय होची तन करी नहीं पारिबा जीवन भाईना दुटा पॉइंट प्रोफेशन पय होची तो हे नहीं पारिबा सुनो तो जीवन भाईना एटे देखिया को पड़िबो मु जो खर्चटा करूची मु जो खर्च करिबा को एटी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मु जो खर्चटा करिबा को जाउची ताको कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेबी ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेबी यू हैव टू लुक फर्स्ट कैपिटल देखेबे जदि कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेबी मु आईटीसी नहीं परिबी नाही जदि मु रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेबी पीएल अकाउंट रे नेबी ताले आईटीसी नहीं पाए यू रिमेंबर दिस पॉइंट पीएल अकाउंट रे तो सर आपण पूरा खर्च हिसाब रे पड़ेबो जदि खर्च हिसाब रे आपण मु देखेबी ताले मु जीएसटी नहीं परिबी जा पूरा खर्च तो इंक्लूडिंग जीएसटी है हां जीएसटी दा पीएल रे नेले देखे पीएल रे देखेले जदि आपण कैपिटलाइजेशन करिवे बैलेंस शीट रे आपण एसेट रे देखेबे ताले आपण जीएसटी नहीं परिबे नाही कैपिटल अपन नहीं पारी एटीसी नहीं पारी नहीं कैपिटल रे देखेला अपन नहीं परिबे नहीं हमरो ताको बिजनेस यूज पई हमें गोटे कैपिटल एसेट परचेज करिया नहीं पारी I am not telling about the capital asset purchase I am telling about the work contract I am doing my office work office building renovation I have spent 10,000 if it is capitalized to my assets I can't avail ITC if I shown it is my PL account as a revenue expenditure I can avail ITC yes you are right you can see the so many decisions are there नहीं आपण प्लांट एंड मशीनरी परचेज करले फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट shown in balance sheet assets and the business purpose is differ that is different issue furtherance of business is the separate issue it is for the work contract Tripati आपण जोडा कहउछंती further use furtherance of business आपण देई पारिए no problem but in case of it is not further of business it is the further your office work so आपण जति निजर ओन अकाउंट कैपिटलाइजेशन करिवे ताले आपण देई परिबेनी जति रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आछी ताले आपण देई पारि again I am engaged as subcontractor I am a main contractor I have engaged as subcontractor the subcontractor issued a bill to me charging rate of it tax at 12% or 18% whether I shall take the ITC or not tell me maybe in that case I must avail the ITC because it is the furtherance of business but the recipient let us consider I am the main contractor I am issuing the bill to the recipient but recipient cannot take the ITC cannot avail ITC but if in the Safari retract case in Orissa High Court it is clearly stated that the recipient also can be
avail the ITC if that that is engaged for the furtherance of business. So it is, but that case is pending with the Supreme Court till date. It is subjudicial, so you can take a concrete decision on this. But one thing is there, if it is a furtherance of business, you can take ITC. If it is a for the section 17.5, another point Tripati जोटा कहते से section 17.5 रे कहूँ मु जति वर्क कंट्राक्टर गोटे जड़े बा रिसिपिएंट कौन सी मोटर पार्ट्स किनला बा कौन सी इठी देछि कोन अछि plant and machinery in certain cases when affixed and predominant to earth would constitute immovable property. Two exceptions are there. Contractor ITC नहीं परिवनी किंतु तीटा exception अछि. जब ये furtherance of business ताले से ITC नहीं परिवो. Otherwise, जब से plant and machinery purchase करुची for the construction purpose, then ITC नहीं परिवो. In other cases, he can't avail ITC. Yeah, I know a trading case re, so car would kill that. The same cases ITC na bana नहीं परियो. Section 75 trading case रे कोनी. Section 75 subclass D से जा कोची, से only construction purpose रे कोची. Construction purpose रे बदी motor vehicle ऊपर नहीं पाए. जे कौन सी machinery ऊपर नहीं पाए. कार ऊपर कौन सी machinery ऊपर नहीं पाए. ट्रेडिंग पर्पस देखो तो आपण जदि ट्रेडिंग पर्पस रे किनी चंती आपण आईटीसी नहीं परिवे ट्रेडिंग कंसर्न गा से ओडे कार केला नॉट अवेलेबल है परिवे ना ज्ञान देखो अवेलेबल है परिवो किंतु जीएसटी माइनस करके आपण डिप्रिसिएशन शेड्यूल रे नेबे एसेटा हां दिस इज ए डिबेटेबल इश्यू दिस इज ए डिबेटेबल इश्यू है पारे न है पारे सब जिनस तो डिबेटेबल इश्यू फुल वैल्यू नहीं जीवो एसेट रे किंतु है पारे काहे काना स्पेशली ट्रेडिंग बाय नियंती पर्सनल यूज करंती बेसी तनु से डिबेटेबल इश्यू दैट इज सेपरेट इश्यू आपण गोटे सुना दुकान करथि आपण गोटे फ्रिज नेबे आपण कहि मो आईटीसी नेबी दैट इज नॉट पॉसिबल it is not possible. It is so many things are there, but one thing is there. अच्छा त्रिपति मत कहि परिए आ केते समय नहीं परिए मु आओ 5 मिनिट्स भीतर ये कर दो ले मु शॉर्ट कर दउ छी हां आउरी अछि ना नेक्स्ट टाइम जो हमर जदी आउरी रहउ छी फाइन आगुटे मोर फाइन आगुटे छुटिया डाउट थिला हां गोटे पूर्ण नायक ए जो गोटे ट्रेडिंग कंसर्न गोटे कार किनला से केस रे आईटीसी इज ए बिग नील आईटीसी नहीं परिबो नाही काहे कि हमर सेक्शन कहउची motor vehicles for transportation of persons having approved sitting capacity of not more than 13% except when they are used for making the following taxable supplies: further supply of such motor vehicle, transportation of passengers, or imparting training on driving and such motor vehicle. In a case रे नहीं परियो नाही से छाड़ ले तीनटा केस छाड़ दे तो सेति में से ट्रेडिंग कंसर्न नहीं परियो नाही नहीं ज्ञान मु कार परचेज करली हेलो एम आई ऑडिबल यस यस मु कार परचेज करली मु केवल कलेक्शन पे जाउची मोर क्रेडिट कलेक्शन करिया पे जाउची हां तार त मु इट्स एक्सक्लूसिवली बिजनेस नहीं एक्सक्लूसिवली इन फॉररेंस ऑफ नहीं इन फॉररेंस ऑफ बिजनेस बोली तुम कोई पारो बट इन केस ऑफ मोटर व्हीकल motor vehicle case it is different. Yes, I am also accepted this one. But motor vehicle case it is different. For the motor vehicle case, it is some specific rule and regulation is there. Motor vehicle case Tripati जोटा कहले, for the purpose of motor vehicle, it is slight difference. ना सी है ना हेलो सी तार पर्सनल नार बिलिंग न करी जीएस नंबर पके बिल करची तमन कार टा किनला कि मोटरसाइकिल टा किनला
से तार जीएसटी नंबर पके बिल आनचे से नारे तो सेटा तार फर्दर वर्क कॉन्ट्रैक्ट तार पर्पस पई से किन जेली से कहूची फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना एटा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस he is collecting credits from his customer. He is going by that car or that motorcycle related to business. Completely exclusively used for business. So in that case we can take the ITC. ना जीवन भाई ना मो क्लियर कहू छी सुनतु से तार साइट विजिट करिया पाई बोली कि से दिन छका से यूज सुनतु देयर आर जे कोन सी प्लांट एंड मशीनरी आपण जदी परचेज करूछंती तार आईटीसी नहीं परिबे फॉर द बिजनेस पर्पस बट देयर आर समथिंग एक्सेप्शन फॉर मोटर व्हीकल्स समथिंग एक्सेप्शन फॉर मोटर व्हीकल्स मोटर व्हीकल पे से केतना एक्सेप्शन दीची ताकू फॉलो करियो पड़ियो आपण नहीं परिबे फॉर फर्दर फॉर द यूज ऑफ बिजनेस बट मोटर व्हीकल पे किछटा एक्सेप्शन देछि सेटा हमें डिस्कशन करि परिबा ए मोटर व्हीकल पे कोन कोन करियो पड़ियो एतिक जिंस मोटर व्हीकल पे थिले ही आपण नहीं परिबे नथिले आपण नहीं परिबे ना ओके Naika will kindly take up 2-3 questions and then we will end this session. Yes sir, I've got it. Next is la valuation kono in case of work contract say the construction of a building wherein say total contract value is 1 crore. Let us consider, I'm giving directly, I'm going to example. Let us consider I'm going to construct a building that construct value is 1 crore. I have supplied the material. I have supplied the material for 30 lakhs. Another 70 lakhs I have paid to the contractor directly. So what will be the rate of tax for the contractor? Tell me. What will be the rate of tax for the contractor? %18. For what? For 1 crore, for 70 lakhs. Tell me. That is the point. Again question da sir बुझी पालेनी repeat repeat total गोटे टंकार गोटे काम गोटे कॉन्ट्रैक्टर नहीं गोटे टंकार रिसिपिएंट 30 लाख सप्लाई करूची ताको मटेरियल जा पई काम करूची कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाइंग 30 लाख मटेरियल another 70 lakhs से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करूची सो केते टंका ऊपर टोटल जीएसटी इंपोज हो सर एटा गवर्नमेंट कामडा ना नॉन गवर्नमेंट कामडा आपण छाडी दियंतु गवर्नमेंट काम नॉन गवर्नमेंट काम मु परसेंटेज कथा को गोटे पठेला मते मु तुमके बे पठिची सॉरी आई एम सो सॉरी टोटल देखंतु मु से गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट देखंतु it will be on 70 lakhs only because the bill he will be issuing will be on 70 lakhs only. It will not be 31 crore. Jana, please go to the section 15 subsection 2. It clear says जदि एग्रीमेंट 1 crore ऊपर हेतिबो जदि एग्रीमेंट 1 crore ऊपर हेतिबो सेट मेंशन हेतिबो जे टोटल एग्रीमेंट इज 1 crore और 30 lakhs क्लाइंट सप्लाई करिवो एवं 70 lakhs र काम कॉन्ट्रैक्टर करिवो ताले 1 crore ऊपर आपण जीएसटी दबा पड़े 1 crore जदि एग्रीमेंट 70 lakhs ऊपर देथिबो ये 30 लाख से सप्लाई करू केते सप्लाई करछि करू ताले 70 लाख से ऊपर से परसेंटेज तक केते जते परसेंट होछु जो परसेंट अपन 12% 12% तो 18% ले 18% प्राइवेट ले हां एटी कोन होछि कोन कोइछि सेक्शन कोन कोइछि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 the value of supply shall include any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply, but to which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods and service or both.
if agreement is for 1 crore तार प्राइस से इंक्लूड हो बा न हो से 1 crore ऊपर दबो यदि एग्रीमेंट फॉर द 70 lakhs he will pay charge for the 70 lakhs. So it is better to go for agreement on 70 lakhs only. Otherwise, Yes, you yes. have to pay. Yes, yes. Before making agreement, this point should be highlighted. Okay. Okay. Any question? सर गोटे क्वेश्चन थिला स्टोन क्रशर ऊपर मोर स्टोन क्रशर अछि से मटेरियल मशीन किनछि क्रशिंग मशीन किनछि ता सहित किछि कंटिन्यू से रिपेयर ऊपर तार माने मटेरियल परचेज करछि सो जोडा रिपेयर ऊपर मटेरियल परचेज करछि तार इनपुट नै करियो ना नै मशीन ऊपर तो नै परियो स्टोन क्रशर वाला किंतु मैं जो रिपेयरिंग पई जा यूज करछि मटेरियल ता ऊपर से इनपुट नै परियो ना नै As per my opinion, he can take a he can repair furtherance of business आछि ना नै परियो स्टोन क्रशर नहीं रिपेयर माने कौन रिपेयर ऑफ व्हाट स्टोन क्रशर सर अरे स्टोन क्रशर नहीं मशीनरी ना बिल्डिंग ना कौन मशीनरी रिपेयर ही कैन टेक बट बिल्डिंग ऊपर नहीं परियो अच्छा सर एबे गुड आउट क्वेश्चन सर जणर पेट्रोल पंप बर्तमान न्यूली कंस्ट्रक्शन करछि पेट्रोल पंप कंस्ट्रक्शन को माने ऑलरेडी कर देलानी बर्तमान से जीएसटी नंबर कला जो प्रीवियस पेट्रोल पंप तयारी पई तार जा बिल्डिंग खर्च होईची जा मटेरियल खर्च से कोची बा मशीनरी आनी बसिची तार इनपुट से नहीं करियो ना नहीं अच्छा मो पचरछि इज देयर एनी आउटपुट लुब्रिकेंट आउटपुट नहीं लेना तार जति आउटपुट ना इनपुट देयर इज नो इनपुट अच्छा जो जीएसटी कोड आसिला सेटे ज्ञान भाई जीएसटी पर ना लेला लुब्रिकेंट ऊपर अछि लुब्रिकेंट ऊपर अछि तमे केते प्रोपोर्शनली करिवो तमरो 12 कोटी रे 20 लाख टका थिबो केते प्रोपोर्शनली करिकि नबो हां हेबनी अच्छा जोड़ा जीएसटी भाई ना इनपुट जाईची तब हम रिपोर्ट क्लेम कर परिया रिवर्स कर दियो रिवर्स सेटा रिवर्स कर दियो प्लांट एंड मशीनरी नहीं करिवो ना नहीं सुनो पूर्ण सेटा रिवर्स कर दियो जहां नहीं छ आईटीसी ताको रिवर्स कर ज्ञान भाई मोर क्वेश्चन जे पूर्ण जो क्वेश्चन कला पेट्रोल पंप ऊपर से मन को टैंकर किनिची तळे जो अंडरग्राउंड जो टैंकर अछि से ताको जीएसटी देकी किनिची बट ट्रांसफार्मर भी किनिची से सब रो इनपुट नहीं परिबो ना नहीं जेहेतु लुब्रिकेंट भी अछि ना लुब्रिकेंट थाउ तमे मन करो lubricant tomorrow what is the percentage of sale of lubricants percentage of sale capital goods monthly sale more is 2 lakhs 3 lakhs sale अछि lubricants हां 2 lakhs 3 lakhs ऊपर तमे ताकू धरि के नबो 100% proportionate करियो तमे जदी आजि डेट रे तमर 20 लाख आईटीसी अछि 3 लाख ऊपर सपोज आसीबो नै ना 20 लाख आईटीसी कोड आसीबो अरे तमे मानो टैंकर किन जगी नले तमे से मशीन बसै जकी नल कोन करछ मानो सपोज 3 लाख आछि मशीन इज जो आपण नोजल पॉइंट इज डिलीवर्ड बाय द कंपनी सेते देयर इज नो जीएसटी हां नाउ नेक्स्ट व्हीकल दा टैंकर कथा कहू तो ट्रांसफार्मर एंड अदर जो ऑफिस कंप्यूटर जो किनु चंदी से जोडा इनपुट नहीं परिबो ना इनपुट नबो yes नहीं परिबो these are the capital goods to explain all those things कैपिटल गुड्स हिसाब रे से परसेंटेज करियो पड़िबो बाहर करियो परसेंटेज बाहर करियो अपन टैंकर ऊपर नहीं परियो नहीं टैंकर ऊपर नहीं परियो फार्मूला नहीं मैंने मोर छोटे क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर निजे ट्रांसपोर्टर तो 12टा ट्रक किनिछि सी मास रे ए वर्ष रे 12टा ट्रक रे आईटीसी मु नेछि बट कंपनी रो 12% मोर आईजीएसटी बिलिंग होउछि से क्षेत्र रे केमिति इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट हबो टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर रो 12% रे आउटपुट इज 12% तमे गाड़ी किनि जो इनपुट अछि इनपुट सेटे रहिला तमे माइनस कर जिवो नहीं माइनस करी तो जीवी जेहेतु ता सहित मोर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट सहित प्राइवेट भी किछि ट्रांसपोर्टिंग होछि प्राइवेट इन दैट केस इट इज सेफ टू पे 12% अदरवाइज हम यदि रिवर्स चार्ज आरसीएम रे पळेले कोन होबो ताको आउटर प्रोपोर्शनेट करिकि माइनस करियो पड़े दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ठीक है आ गोटे तरह ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर ऊपर रखिबा ओके मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर दिटा रखिया एंड रियल एस्टेट गोटे दिन रखो
पूरा रियल गोटे एस्टेट दिन कोड दिन दिन लाइक रखिबा रियल गोल्डन एस्टेट पूरा कोड दिन रखिबा पूरा Real estate and building construction. एनी क्वेश्चन Questions are in. okay so my brothers again I thank to all of you for patience hearing. We have taken near about 2 hours for this topic. बहुत गुड़े कॉम्प्लिकेशन आसछि किंतु मु अगेन से सायदटा कहबा चाहूची जे कॉम्प्लिकेशन नथिले लाइफ रो मजा रहेनी प्रोफेशन रो मजा रहबनी कबीरा कहे संसार में सबसे खुश वकील कबीरा कहे संसार में सबसे खुश वकील जीत गया तो फीस मिला हार गए तो अपील सो थैंक यू ऑल जय हिंद नमस्कार जय 2 hours ना 20 minutes Thank लगला you, sir. Namaste, sir. नहीं कोई लॉकिंग दा बहुत बढ़िया है President sir. हाँ भाई President sir को मन पाए Let me say something because I have left 2 important notifications. please करिए One is regarding this is a circular circular number 148 regarding SOP standard operating procedure for revocation of cancellation of registration. 148 So, dated it is dated this is 18th May 2021. So in case suppose 30 days has already passed, you have to give an application to the authority and the higher authority will approve and then only the revocation can be done if it is done within 90 days. This is one circular. Another circular is 153/9 dated 17th June 2021. This is also important because it has been clarified that GST on milling of wheat into flour or paddy into rice, wheat into flour or paddy into rice for distribution by state government under PDS is exempt from tax. PDS, paddy and rice. Paddy into rice, wheat into flour. Because many of the millers are milling paddy for procurement by the civil supply department. It is meant for PDS, so it will be exempted. Exempted. Okay, thank you. is it done सेटा सर्विस टा एग्जेम्प्टेड हो ना कोन एटा exempted करिसंती exempted करछन है ना रिवोकेशन टा जो कहले एटा 30 डेज ना आफ्टर 30 डेज ना ज्ञान भाई रिवोकेशन 30 डेज आफ्टर 30 डेज तो कैलकुलेशन टा टिकोंदु 50 लाख रे ऊर्ध्व सेल दिला आईटीसी कैलकुलेशन टा टिकोंदु सर्कुलर टा कोडा 50 लाख टर्नओवर थिबो मंथली एटा बड़ चैप्टर टा भाई सर्कुलर टा तो आपन कहउथली ता विषय टे कोन केमि कोन एडजस्टमेंट हबो टैक्स कैलकुलेशन केमि हबो 1% जोटा तो कोन जीएसटी टीडीएस ना जीएसटी नहीं 50 लाख आय अधिक टर्नओवर सेल टर्नओवर अछि तार 99% तुम आईटीसी नबो 1% ऊपर तार टैक्स दबो जो सर्कुलर टा सेटा मु तमु पठैतली I have already forgotten but one thing I remember if the dealer is paying 1 lakh tax or paid 1 lakh tax in the previous year there is no requirement of that section and another 2-3 provisions are there I have forgotten okay we will discuss it clarify अबे सेटा डिस्कशन करिवा अगेन नेक्स्ट मीटिंग okay thank you so much indirect access committee and its members thank you so much mu au basic kichi kahuni committee member manako pai because after this conversation after this deliberation we can absolutely understand how much pain you all have taken for this presentation a wonderful presentation indeed बाकी जहा कहिबे हमरो वाइस प्रेसिडेंट ताकरो वोट ऑफ थैंक्स देला बेले सी सेटा को कहि देबे now under the any other matter we have 2-3 topics we would finish it very shortly आज होची हमरो ट्रेजरर रो एनिवर्सरी
तो एनिवर्सरी बॉय रंजन आर यू देयर रंजन अच्छा हां कथा होचंदी एने तुम कि जानलो अच्छा 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 हां हां रंजन भाई ठीक अछि बर्तन रंजन या परे कहबो in the meantime actually very recently we have observed Father's Day amro Father's Day re kebe simti meeting ame kebe rakhi parune तो very recently we have observed Father's Day आ ए भितरे पूर्ण just informed me कि ए भितरे पूर्ण रो बापा कर बोते फर्स्ट एनिवर्सरी हेतिबो एडा फर्स्ट प्रथम वर्षिकिया ना पूर्ण सेकंड ओके तो सेकंड तो सी बहुत सी गोटे फादर्स डे ऊपर किछि कहबा पई चाहूची तो आई वुड रिक्वेस्ट पूर्ण टू काइंडली स्पीक ऑन फादर्स डे थैंक यू प्रेसिडेंट बापा को विषय तो जहा कहबा कहि परियनी बापा को ऊपर मु कविता लिखिथिली से आपन को सुनिया चाहूतली सेटा हला अदृश्य सोर्स बापा बापा तुमे ए मर्त्यमंडल रो पूज्य दुर्लभ अन्य मनुष्य किए बापा तुमे ठाकुर नुहे ठाकुर को अधिक सौथिबा मनुष्य किए बापा तुमे आखिरो लुह नथिबा विशाल छातीर अजब मनुष्य किए बापा तुमे अबुझा मो भाषा को बुझी पारुथिबा अद्वितीय आचिंत्य ग्रंथ किए बापा तुमे छिंदा चपलर फोटा पोशाकर संतानर भविष्य देखुथिबा मनुष्य किए बापा तुमे असीम आकाशर तारा गणुथिबा दतरे साइकेल चलुथिबा मानवटिए बापा तुमे हल लंगल मा माटीर भाषा बुझी पारुथिबा खटिकिया मनुष्यटिए बापा तुमे निज पेट काटी परिवार भोक सौथिबा स्वयं सिद्ध मनुष्यटिए बापा तुमे पूजा पाउ नथिबा दिव्य भाव भक्तिर मंदिरटिए बापा तुमे निज जड़ी संतानर भविष्य गढ़ुथिबा अलिबा सलितटिए तथापि बापा तुमे उत्तरदायी नमस्कार थैंक यू पूर्ण वेरी वेल रिसाइटेड खाली गोटे जिनस मु कहबी जो मानकर बापा अछंती से माने बहुत भाग्यवान जो मानकर बापा नाहांती से मानकर बहुत दुर्भाग्य and I am one of them we all remember our fathers kana bappa is explain kare hobone bappa kono ma kono anyway let us not be so emotional acha amar anniversary boy asla ki Ranjan are you there unmute karo Ranjan अरे जणे रहिला हबनी माने Ranjan हाँ Ranjan can you please inform our members about the subscription please अच्छा हमर तो जून 30 थिला सब्सक्रिप्शन फीस ता आमे जीएस ग्रुप इंश्योरेंस कलेक्शन पई सेटा को आमे कलेक्शन करि पारने आमे सेटा को जुलाई 31 जे नबा आ प्रति मेंबर 2000 लेके पेमेंट करिवे ऑनलाइन रे दे देबे समान पेमेंट आ ओनली से टीबी अकाउंट को तो जो टीबी अकाउंट आईओबी भाईना रंजित भाईना मोर गोटे प्रपोजल थिला जे कोविड टाइम रे अत्यंत फीस टा टिके नॉमिनलाइजेशन करा दो मिनिमम 1000 रखा दो नहीं पूर्ण सुनो जे दबनी सी हम रिक्वेस्ट भाईना जे दबनी भाईना सुनंतु करिबा समस्त पई करिबा न करिबा बोले भाईना समस्त आबे आपण देबी बोली बाहरबे मते देबा मु कोन दे करबी मोटी दे पारी होला किंतु अन्य माने भी बाध्य होई कि देबा पड़िबो से दृष्टि को समस्त पई करा दो जे देबार अछि दो 2000 कि आवश्यक है जे न देबार अछि से किछि नॉमिनल फीस या ऊपर एक्चुअली गत थरा भी हमर एमते डिस्कशन हेतला एंड वी हैड ओनली वॉलंटियर्ड टू रिड्यूस द अमाउंट बट वी मेंबर सेड कि जेहेतु एटा गोटे 2000 टंका जिंस तो या ऊपर हमें एटा डिस्कशन करबानी we would continue with this amount सेटा पे हमें करबानी कारण हमें भी we have discussed with many members तो everybody is ready for this 2000 2000 टका पई कार से किछि विशेष ऑब्जेक्शन रहूनी सेमिति जदी स्पेसिफिक कार जण दिजंकर थाई थिपो भगवान करंतु न थाउ जदी भी कार थिपो दे कैन कांटेक्ट अस वी कैन कंसीडर एंड डू द नीडफुल तो सेही हिसाब रे समस्त को रिक्वेस्ट रहला जे काइंडली जुलाई हमरो जुलाई 31 कहलो तो रंजन जुलाई 31 भीतर हमें समस्त पेमेंट दे दवा
সেই मेंबर भी हमें ना ओपन करिवु हाँ हाँ जदि भी सेमति के जणा पड़िबो जे हमर जण जण के थिबे वी डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी एल्स लाइक दिस डिस्क्लोज करिवु ना डिस्क्लोज करा हबनी नाउ त्रिपति कैन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली speak about the GIC's group insurance scheme status and position. Okay. Thank you, President. आपण जान हमर लास्ट ईयर बहुत चेष्टा कला पर लास्ट ईयर हमर डिमांड थिला जे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम गोटे करा जो हमर मेंबर मनकर से ये रे वो धन्यवाद देवी हमर हेलो हमर रविशंकर पटनायक से सदाबले तार डिमांड थिला कि हमर गोटे ग्रुप इंश्योरेंस करा जाओ और तांकर तार डिमांड फुलफिल हेतला गत वर्ष हमें वर्ष कंप्लीट हे गला और नेक्स्ट रिन्यूअल प्रीमियम हमें भी ऑलरेडी डिपॉजिट कर सारलु एबे हमें 67 मेंबर्स रो हमें प्रीमियम डिपॉजिट करलु जीएसटी साथी रे 1,07,057 टका हमें जमा करलु परिसर ने हमर पॉलिसी मिली जीव मंडे सेट मिली गला हमें आपन को सेट करलु समस्त मेंबर को जो माने हमारा जीआईएस स्कीम रे पार्टिसिपेट करते समस्त को धन्यवाद और टाइमली बहुत शॉर्ट पीरियड रे सेमाने अप्लाई करते सेते समस्त को अशेष धन्यवाद एई माने स्पिरिट रो सला थैंक यू ओवर टू प्रेसिडेंट थैंक यू त्रिपति खाली केमति चेष्टा करी कि आपन से जो रसीदटा आसीबो रसीद मंडे वी विल गेट हाँ प्लीज we can claim it as a deduction out of the income tax tax. Thank you. रंजन के म्यूट करो तुमरा हाँ बापी काली रो मीटिंग पे किछि कहि देबा कि टिके भाई ना हाँ सेटा ही जस्ट नु कहया पे जाउतली now for the information of all members you must be aware of the information by the posting of our recreation committee chairman. So the recreation committee this time has tried to have an entertainment program on digital platform. So I would request our chairman Jiban Das, recreation committee, to kindly inform the members about the program. Thank you, President, for giving me the opportunity. Tomorrow by 6:30 PM onwards, we are going to organize a beautiful entertainment program on virtual platform. This is for the first time we are going to perform. So all are requested to attend this program from 6:30 with family and friends and make it a success. एथरे बोलो मैजिशियन भी आसीबे आपन को मैजिक प्रोग्राम देखबे गीत भी पाइबे बहुत प्रकार एंटरटेनमेंट पाइबे तेणु ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टुगेदर इन दिस मीटिंग फ्रॉम 6:30 onwards for at least 2 hours, maximum 2 hours will take. So all are requested to attend, all members and family members and friends, if they are interested, can attend this meeting tomorrow by 6:30 PM. Thank you, Mr. President. So I will add a little bit lines to Jivan Vaina. It basically होची not ताकू डे मैजिक बोली कहि हबनी. एटा बेसिकली हम गोटे रिक्रिएशन कमिटी डिसाइड कला जे गोटे एटलीस्ट हमर एंटरटेनमेंट जे तू हेई पारुनी बा फिजिकली हबाटा फिजिबल नुह इन द नियर फ्यूचर. So let us experience a virtual entertainment program. तो गोटे basically he is a tricker. माने से जो ट्रिक करिवो से तास देखेबो कोन सब करिवो सब. Let us experience one. ता सहित गोटे हमर लोकल सिंगर दीटा आसीबे बाहरु भी सिंगर दीटा आसीबे तो सेटा गोटे 2 घंटिया प्रोग्राम हबो. And ए जो प्रोग्राम ता हबो we would request all members, basically this is a family program. तो समस्त घर माँ स्त्री भौणी भाई झील झियारी पुतुरा समस्त को ए लिंक टा आमे शेयर करि परिबा. इवन मु मध्य मोर भाई भौणी मोर जोई भाउज मान को भी ए लिंक टा शेयर करिवि. तो हमर केवल फैमिली रे जो माने थिबे आमे से मान को शेयर करिबा. एंड try to prefer to see it, to watch it on laptop or desktop, so that it is entertaining रहिबो. तो एरा आपण माने मध्य आपनकर एबे सपोजिंग हमर अशोक भाईनाकर झियो अछि दुबई रे तो आमे दुबई भी ताकू पठेबू सो दैट सी तार स्वामी सहित भी एठी बसिक से जिंसटा को देखि परिबो.
तो जो मानकर हमर भाई भौणी भाउज जोई पुतुरा झियरी भाणीजी भणजा को द लिंक इज अलाउड तो आमे आम बाहर को कागो ए लिंक ता दबानी तो एडरे इफ इट क्लिक्स आमे या पर भी चेष्टा करिबा टू हैव फर्दर वर्चुअल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स तो आई होप कि हमर सब मेंबर माने एडरे सहमत हेबे एंड वुड सपोर्ट अस थैंक यू एला इंटरनेशनल प्रोग्राम रे डिनर प्रोग्राम अछि डिनर प्रोग्राम का डेफिनेटली अछि डिनर प्रोग्राम रे मोर भाउज मानकू मोर माउस मानकू मोर भाई बहू मानकू समस्त राति रे रविवार रे बढ़िया खाइबा करी घरे खुई देबे ऑनलाइन रे मगे दावा ना भाई ना ऑनलाइन रे मगे दा हां ऑनलाइन रे मगे दावा so now I would like to request our vice president Ipari Ashok to kindly present the vote of thanks. Thank you, Mr. President, and also the smiling secretary for giving me the opportunity of extending vote of thanks. Today, all the members might have noticed a difference in the meeting. The difference is generally the protocol of the meetings generally follows like this. The president starts the meeting and the proceedings will be taken over by the president till the end. But today our president, to create a different scenario, he made a different scenario by offering the national anthem, invoking of national anthem and observing the 1 minute silence by giving the opportunity to the greetings committee chairman. So the greeting committee is now also taken the best efforts in discharging its duties by distributing to all the committee members, involving all the committee members to discharge this function. So I thank all the greetings committee chairman, members and chairman and vice chairman by doing this wonderful job so nicely. The greetings committee today, they have conveyed the greetings to members who have celebrated and going to celebrate their birthdays in the month of June and the marriage days. For this, I thank the committee chairman Krishna Chandra Sahu and the vice chairman Girish Kumar Mahapatro, the members of the committee Saroj Sahu, Ramnayan Patro, Ranjit Kumar Bacha and Prabhat Kumar Mishra. Thank you all for the wonderful job. Now coming to the committee which is doing exceptionally well, that is the Indirect Taxes Committee. The committee is taking all the pain and doing a lot of exercise in educating to the members and themselves educating by own. They are doing a good job by taking up a task like today's topic, a debatable topic, the works contract. It's actually a difficult topic, typical topic. So many members have different doubts, which was proved by today's deliberation. When the deliberation is going on, it was so lively that the members who have participated very actively, the member Jivan Das, Punachandra Hotta, Biswajit Tripathi, Jnanaranjan Sahu, Kailash Chaudhary, Tirupati Patro, and none the least, Dave Bhaina. They have taken very active participation role, which encouraged in turn the today's speaker, P.K. Naik sir, to go on attested 2 hours. We can't believe it. It is a very tough task to go for a 2-hour session. But he has happily, step by step, very detailedly gone through the subject. Thank you very much, sir. Now, another committee which has come to limelight from today meeting onwards, that is taxation, Tech Savvy Committee, for which the chairman is myself, and the vice chairman is Uttam Kumar Satpathy, and the members of the committee are Rashmi Anjan Padi, Kiran Kumar Mahanti, Kishore, and Priyanchi Narayan. Yesterday evening, all of a sudden, our president has got a thought that all should have a background, same background, to look like a corporate style of meeting. Sir, President sir, we are happy to fulfill your desire by to the maximum we have done it. I hope maximum members have done it, and we will see that tomorrow something better will
some more members will also do this. So thank you very much. And our team is also ready to do the services at your disposal at any time. And now, lastly but not the least, I thank Bujji, Bujji for the Zoom, for which I should be thankful to him. Because of that, we could do the meeting so successfully. I thank one and all who has participated in the meeting, all the members who have actively participated in this meeting. Thank you one and all. Thank you so much, our loving Ashok Bhaina. Bhaina, you have got a marvelous voice, Bhaina. Thank you, thank you. When you speak, we are compelled to hear you. Thank you so much. So, ei आशीर्वाद रा हम ऊपर थाउ. तो thank you so much. आमे बे ई भितरे कथा हो हमरो टेक सेवी कमिटी रो मेंबर माने और रंजन साहू हमरो काली रो प्रोग्राम रो बैनर टाकू भी सी बर्तन फाइनल कर देई गलानी माने करी सारलानी. तो जदि पॉसिबल हबो रंजन आमे बे बैनर टाकू शेयर करि परिबा कि एठी करि हबो बापे करछि सेडाडी करछि रिलीज करिया पे. अच्छा ताले मु गोटे काम करछि मु खाली मीटिंग टाकू एडजर्न कर दोछि सो दैट वी कैन हैव ए चिट चैट. और दीटा हैला कोन चिट चैट हम भूख लागि नथियो की. ठीक अछि खाली let us have a look at the banner and तापरे we will end it. If members are interested, they can chit chat. Yeah. And all members are requested to enjoy the program with family. Yes. I will in advance. I will thank the education committee also. I have forgotten. In advance, I am thanking the education committee who have taken the utmost effort in first ever entertainment program. I thank the education committee also. Recreation committee रो सबु member माने कष्ट पड़ी करी समस्त को phone करी करी they have put all efforts for this program. हमरो जदी एमिति समस्त लागी जीवा ना ताले कोन सब हेची वो सब बरमपुर टैक्स बार एसोसिएशन रो हमरो मूल जिंसटा होची एक्चुअली गोटे माने गोटे ब्रदरलीहुड जिंसटा रहइबा दरकार समस्त को भितरे समस्त भाबिबा को पड़ियो जे मु तारो सीए मोर आमे समस्त हम समस्तंगर सेही जिनसटा भाबी देले आ किछि असुविधा हबनी. रंजन भाई भाई ना शेयर स्क्रीन आसलेनी टीवी ये रे छाड़ देजी शेयर स्क्रीन ता किमित हबो त मुएले जाननी शेयर स्क्रीन अगर अशोक भाई तो रामबाबू मुपुआ रामनारायण पात्र टैक्स सर्वे कमिटी की कोन अशोक भाई शेयर करथले WhatsApp केटा तो छोड़ा हे गेले समस्त टैक्स भाई टीम को नहीं करिया पड़ियो जे नै गोटे या ऊपर छाड़ देले भल लागिवो ना डिलीट आगे कोइ दिले टीवी सेट कोइ संतु आपण रामनारायण पात्र को कहि दियंतु सी स्क्रीन शेयर कर देबे कोटे सर ये स्क्रीनशॉट आउट कर देला राइट. President sir, respected President sir, ठीक है on mute speaker टे on. अच्छा नहीं कह मु कह बोली कहूची बट देखले म्यूट ही आपण जोडा स्क्रीन शेयर के आम स्क्रीन डाले आपण कंट्रोल कर परबे ताले मु जानि नि एक्चुअली टिके भाई ना टिके भाई जान दो हैं टिके रह जा रंजन कोन करूची एबे फाइनल जानने कोई बहुत जानछन हां नहीं मु चेष्टा करछु जानबा पई बापे ना भोजी अछि भाई ना कोठी अछि भाई ना अभी अविनाश करछु बदे अविनाश संग शेखर भाई ना भोजी सत्संग शेखर भाई ना को भोजी अछि अच्छा व्रत थ्रेड सेरेमनी हां हला अविनाश आज जाने केबे अछि टिके जूम करिया रंजन. हां भाई ने Avinash is done. Avinash, can you do Zoom? Uncle Chapande. Hello. Avinash, is my question Zoom होता है? Can you do it Zoom? But that out scheme.
beautiful, beautiful, beautiful. Right. बस Right. बढ़िया बढ़िया है काली काली एई बैनर टा समस्त जेतरा हमें प्रोग्राम रे अटेंड करवा everybody will be keeping this as a background image. Thank you. भाई ना हो केमिति हबो हला अविनाश करछि तो अविनाश already कोई साल अविनाश प्रेसिडेंट अविनाश सर करसलानी रंजन तो अविनाश बापा तो काटी दिए थरो अविनाश नॉर्मल स्क्रीन को नहीं ऐसे हाँ थैंक यू अविनाश थैंक यू all the members are requested to keep this as the background screen. If anyone is having any doubt, you can approach your children. They are the best guides to us. They can do it very fast than us. Right. Or else we have already given the step-by instruction. You can follow that instruction also. But try to come with that banner. Vice President sir से टेक इंस्ट्रक्शन आमान मुदले टे फॉल दिना पिल्ला मान को जणा थिबो नथिबो आउटर शेयर करो किछ बात I mean, that's why group पे छाड़ देइछु साडी आउटर शेयर कर दो किछ असुविधा आज्ञा विश्वजित भाई तुम पिल्ला केबे हेलो हम पिल्ला हेने बुढा हिसाब दर बुढा हेलो नै दर बुढा भाई अब पिल्ला आनो वाली पूछो जणा नै ना एबे करले हां रंजन एबे कला एबे रंजन सिख देला रंजन दिस इज डन भाई अरे भाई छाड़ो सेटा मेल रे छाड़ो रंजन ओके तो मेल रे छाड़ो हां छाड़ीबा हां मेल रे छाड़ देले सम ऑटोमेटिकली आन देबे तो thanks everybody for today's meeting and everyone is requested once again to attend tomorrow's entertainment program with family समस्त भाई भौणी भाउज पुतुरा झियारी भाणीजी भणजा मानको लिंक टा पठै दियो except outsiders at 6:30 p.m. Ranjan at 6:30 p.m. time coin at 6:30 p.m. onwards भाई ना हाँ मैं ना ए जो शेयर स्क्रीन टा मोर छोटा रंजन सिकेला हां सेटा सिखेबो ना सेटा अशोक भाई ना कहले परा हम करि परिबनी हम पिला को सिखिबा they are more experts ठीक अछि रंजन काटी दियो तो भाई ना तो let us end the meeting okay thank you so much members thank you so much the meeting is adjourned now thank you good day